Hi, Uddu. Hi, Abhyuday. It, I don't know why it feels like we're recording after a long time, although it's been the usual 2 weeks. Hmm, maybe. Uh, you know that we usually record on Saturdays, right? Huh? The reason I asked to move it to Sunday this time was that I told you about that coffee tasting, right? The decaf project. Huh? That was supposed to happen on Sunday. And Abhi, I am re- ये कॉल तेरे साथ अटेंड करने के ठीक पहले I just got done with the coffee tasting. Oh, I was. Are you looking at the camera? I cannot see the camera. I suddenly feel weird not looking into your eyes while talking. Hey, bhai. Anyway, I was really excited about this event. Mm-hmm. I'll share some pictures with you since you cannot look at my camera. Uh, Oh, so do you have to record yourself? nice. So the way it happens is James Hoffman is a huge personality in coffee, Huh? and he does these coffee tastings sometimes. And like coffee tasting is important for a hobbyist, I guess, to better be able to articulate and realize the differences between different kinds of coffees. Uh, like basically, what you do in a tasting is अलग-अलग तरह की कॉफी साथ में लेके बैठते हो. So you are better able to differentiate between them. It Hmm. makes sense. Huh. So what is bar? It was a little different. Uh, we were specifically tasting for different decaffeination processes. Decaffeination मतलब बीन्स में से कैफीन हटा देना. Yes, the decaf has a pretty bad reputation in the community. It has a bad history of bad reputation, but recently people have been getting more interested in it. And the reason decaf tends to have a bad reputation is primarily because not that many people are interested in it, and because of that, roasters tend to not care for it that much. Like the beans are usually older than they should be, stuff Hmm. like that. Hmm. So they tend to taste worse too. So there are three main processes of decaffeination. Uh, and uh, another bag for control, a regular caffeinated coffee. मैं पूरा setup लेके बैठा था, and it was a live event. Oh. Yeah, so like YouTube पे it was live. Hmm.
Everybody was sitting with their own setups. Hmm. Another interesting thing about this particular tasting is that uh, the coffee was not roasted in one place for everyone. What they did was they decaffeinated one sort of bean with the different processes. They chose a bean, particular bean, bought tons of it, and divided into four parts. एक controlled caffeine wala, and the other three they sent around the world to different uh, decaffeination factories Hmm. जहाँ पे वो अलग-अलग processes से decaffeinate हो. And then from when the decaffeinated coffee returned to them, they distributed this coffee to local roasters around the world. Hmm. And वो the local roasters roasted these coffees, this coffee coffee by themselves, packaged it, and then distributed it to the consumers. That was interesting. Okay, roasting too has a huge impact on coffee, right? Hmm. I don't know much about like process क्या है. Uh, I was also excited about it because इसके पहले मैंने कभी की tasting नहीं किया. I've never मैं कभी बैठा नहीं हूँ उस कॉफी के multiple beans के साथ and tried to taste the difference. Hmm. This is a very unique experience क्योंकि you like for tasting you can just buy अलग-अलग type के beans and try to differentiate between them. But trying to taste decaf, ah, एक ही bean का अलग-अलग तरीके process से decaffeinated, that's pretty much not possible to do unless it's a part of a huge project like this. Hmm. क्योंकि you you cannot just get a small batch of coffee and get it decaffeinated to like test for differences, right? बड़े So स्केल like में these करना are होता है. like the to get that in the same beans, everything. Hmm. uh, मैंने pictures भेजी है उसमें से एक में तुझे वो भी दिख रहा होगा एक there's a sheet, a score sheet kind of. हाँ. So yeah, वो लेके बैठते हैं and you brew the coffee for cupping. एक spoon लेके बैठते, then you taste for differences. It was really fun and also insightful. Did you like the coffee? I did taste and smell differences Hmm. between them. Mm-hmm. One of them was bland. I found it that it was a little bland. That was the sugar cane process, ethyl acetate. Hmm. But I think that's probably more because of the difference in roasting than the decaffeination process. Because as I was getting it out of the bag, I noticed that uska roast was it looked darker than the others Hmm. significantly. And
I don't know if I've told you, but like, uh, the coffee culture is for hobbies at least is gradually like it's been moving towards uh enjoy appreciating more lighter roasts because they taste closer to that specific coffee and brings out the uniqueness of that coffee. And as you roast them darker, they up lose that flavor. Hmm. Although I cannot if it was because of the roasting or the decaffeination. But I don't think I should have noticed itna bada difference because of the decaffeination. Then that's why I'm saying it's because of the roasting. Caffeine, uh, like for some people, I don't know much, but कैफीन एक कई लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं होता है उसके लिए कॉफी का बिकॉज लाइक दे थिंक दे नीड कॉफी टू वर्क हेल्प इन देयर वर्क और कैफीन उनको समवॉट थोड़ा ज्यादा स्लीपलेसनेस हटा देता है क्या बोलेंगे स्लीपीनेस हटा देता है कैफीन That is true. As a lot of people, I mean, most people who drink coffee develop a dependence on coffee. Because it is a psychoactive drug, right? It stimulates you, and over time you will grow dependent on it. Uh, but if you want to enjoy coffee because you like the taste of it and you probably don't want to deal with the caffeine always, right? If maybe you're taking a break from caffeine to like uh get rid of that dependence. If it maybe you want to drink coffee at night, or maybe just caffeine just does not suit you because a lot of people don't like the stimulation, right, they get from caffeine, and but you still want to appreciate coffee. Um, Decaf has a lot of value, I would say. Because it is a hobby, right? जो मिल्क कॉफी होती है डज इट हैव दिस लाइक उसका कैफीन उतना ही स्ट्रांग रहता है जितना एक जो ब्लैक कॉफी रहती है उसका रहता है ब्लैक कॉफी नहीं क्या बोलेंगे उसको विदाउट मिल्क जो कॉफी रहती है I'll tell you how milk coffee is made. Do you know what an espresso is? एक कंसंट्रेट बनाता है कॉफी का और फिर उसमें मिल्क ऐड करता है आई थिंक नहीं Like espresso is a method of making coffee. उसमें वो मशीन यूज करते हैं, espresso machine, एंड उससे एक बहुत concentrated कॉफी सोल्यूशन निकलता है. हाँ uh, it and you can either have it by itself or concentrated solution. People drink espresso. Some people do not like concentrated itna concentrated coffee. It's too strong. So they add water to it. That's called an Americano. And हाँ that's what I usually have when I'm not having a manual brew. Manual brew is all the stuff I use at home, right? हाँ uh, और मैनुअल ब्रू में पहले से ही डाइल्यूट होता है, you don't have to dilute it more. And some people like coffee with milk.
तो वो एस्प्रेसो में दूध डालते हैं। सो क्योंकि एस्प्रेसो इतनी कॉन्सेंट्रेटेड होती है, you can get away with adding milk to it. हम्म। तो जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि उसका मिल्क ऐड करने से उस पर फर्क पड़ता है जो कैफीन के इफेक्ट्स होते हैं उस पे। Oh wait, yeah. So like, I you are not really changing the amount of caffeine in that, right? उसमें या तो हाँ। पानी डाल दो या दूध डाल दो, कैफीन उतना ही रहेगा। नहीं बट जैसे स्पाइसीनेस फूड का कम हो जाता है इफ यू ऐड मिल्क टू इट, या फिर उस कुछ उसको सप्लीमेंट करने के लिए कोई सब्सटेंस डाल दो, उस सेंस में पूछ रहा था मैं कि मे बी उससे I फर्क ना mean, पड़ता हो। spiciness is something you feel on your tongue, right? I हाँ। feel that if you are have like I honestly do not know uh the science behind it because I've heard some people say that they feel more stimulated after drinking black coffee. I don't understand why, but हम्म। in my simple logic, that shouldn't happen because you are just having the same amount of caffeine or which जाके तुम्हारी body में absorb होता है and dilution does not really affect that. हम्म। तो डीकैफिनेटेड कॉफी और कैफिनेटेड कॉफी के टेस्ट में कितना डिफरेंस पता चला देखो? Uh, I'll tell you. तो इसमें तीन processes थी, right? हाँ। Uh, एक था if you look at my sheet, एक control एक there's a carbon dioxide process. उसमें carbon dioxide यूज होता है and there's a uh, ethyl acetate or the sugarcane process, and then there's a Swiss water process. The first thing I noticed was that they all smelled quite different. Brew करने के पहले भी. हम्म। Uh, the regular caffeinated one and the Swiss water one, especially, they had a strong aroma, sort of all like pulpy almost. It felt pulpy, like a fruit. है। You often use fruit, yeah, ऐसी चीजें to uh, describe coffee. बट तू अरोमा की बात कर रहा था, राइट? Yeah, हाउ डू यू like गेट द सेंस ऑफ पल्पीनेस इन अरोमा? do you not get the sense of pulpiness by smelling a mango? नहीं, हाउ? Like I would describe the smell of something like a mango as pulpy, but at the same time, I wouldn't describe the smell of a banana as something pulpy. आई आई डोंट गेट इट। मेरे को मैंगो की स्मेल करके भी उसको पल्पी फील, बाय पल्पी आई वुड इमेजिन समथिंग not associated with smell but with texture, solely with I mean, texture. it makes sense, but uh, okay. Imagine this. Spiciness is a sensation of taste, right? हाँ। But you can still smell spicy food, right? Like you can smell spiciness. Maybe because it does not feel spicy, but you have learned to associate that smell with spiciness. uh, okay but I हाँ, and when you said mango with associated with pulpy, I usually when I think of pulpy I think of orange या फिर kiwi. Mango I've never thought about as pulpy.
क्या बात कर रहा है? Like probably मेरे I have that in my mind because of all the Mazda ads I grew up with. I mean, that's something I can say. Like different words can mean different things to different people, I guess. हम्म, Uh, yes, this I was really looking forward to it, and it was a really fun experience. हम्म, अब क्या होगा उसमें? Nothing, मेरी कॉफी बची हुई है, अभी वही खत्म कर रहा हूँ. नो आई मीन जो वो डेटा कलेक्ट करेंगे उससे दे विल हैव अ फॉलो अप वीडियो. एक्चुअली इसका पर्पस ये नहीं था डेटा कलेक्ट करना. हम्म. Like, इसका पर्पस था, I've told you right कि tasting helps feel like it helps educate you about coffee. Like tasting them side by side, you realize the subtle differences between them. हम्म. Although they did say that they'll collect data, they'll put out some form and see if they can find anything interesting. हम्म. I would like to do some kind of instant noodle tasting someday. I I I have done that. Do you know that? हैं? I mean not really tasting. मैंने ऐसे side by side नहीं रखा था, but I mm, uh, I don't know. I probably would have told you about it जब मैं अपना undergrad कर रहा था. I bought a bunch of cup noodles, I don't remember. and like I yeah, I cannot find a picture of it, but yeah, I bought a bunch of cup noodles and tasted them one by one. I think मैंने score भी किया था उन्हें कहीं पे एक टेबल में. ओहो. It was yeah, it was nice. मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत वाइल्ड रहे कप नूडल्स के साथ. लाइक तो कभी मैं बताया था अनएक्सपेक्टेडली जब सिक्किम के भी ट्रिप पे वो एकदम स्पाइस वाले कप नूडल्स मिले मेरे को. एंड उसके पहले मेरे को एकदम ब्लैंड कप नूडल्स मिल चुके हैं. फिर वो मैगी का कप नूडल्स है जो वियर्ड सा मेरे को अच्छा नहीं लगता. मेरे को मैगी अच्छी लगती है बट मैगी का कप नूडल्स सब मेरे को एब्सोल्यूट हेट हो चुकी है. मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो. और I actually हाँ, uh, बोल बोल. uh, bought one of those imported cup noodles which are slightly expensive. हाँ. I'll send you a picture. वो वो specialty shops में मिलते रहते हैं. हाँ, वो कोरियन टाइप की These good. ब्रांड्स होती है वो वाले. Yes. I cannot find a picture of all of them together. उनमें से एक का मैंने पिक्चर भेजा. ओह. Like हाँ. they are really nice. हम्म. एंड यस, हाँ मैं भी ट्राई करता. जो सिक्किम में था वहां पे भी जो डिपार्टमेंटल स्टोर था वहां पे वो लाते थे अलग अलग टाइप के कप नूडल्स. And आ, मैं एक्चुअली कॉलेज के कप नूडल्स में से मेरे को बस एक अच्छा लगा था. वो था एक वो वेजिटेरियन लोकल ब्रांड का बहुत ही मतलब वो इम्पोर्टेड वाला नहीं था. वो मतलब 25 रुपए का एक कप नूडल्स था. एंड इट वाज रियली गुड. मतलब आई हैव नेवर मेरे को मैगी से ज्यादा बेटर लगा था. वो छोटा सा कप नूडल्स था वो. I mean,
To be और fair, हाँ, Maggie cup noodles are shit. नहीं मैं The मैगी कप नूडल्स की that बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल मैगी की बात कर रहा हूँ। वो तो शिट है ही कप oh, नूडल्स that's उसके। surprising. हाँ, बट आई डोंट नो इफ आई हैव टोल्ड यू, इसके बाद जब मेरे को बहुत अच्छे लगे, तो मैं वापस स्टोर गया कि हाँ, मेरे को और लेना है ये वाले कप नूडल्स, और वो उनने हटा दिया स्टोर पे, एक भी नहीं था। बट वो जो कप नूडल्स मैंने खाया था, उसी का चिकन वाला वर्ज़न पूरा भरा हुआ था एक शेल्फ उससे। पूरा Mocking you. ह लाइक और कोई कप नूडल्स नहीं रखा उन्होंने, सिर्फ़ उसी के चिकन वाले से पूरा पूरा शेल्फ भरा हुआ था। मतलब 50 से 60 कप नूडल्स रखे होंगे उस बड़े से शेल्फ के अंदर, सिर्फ़ चिकन वाला है, एक भी वेज वाला नहीं। मेरे को लगा कि हाँ, मेबी वेज वाला का स्टॉक खत्म हो चुका है, और मैं वरुण के साथ Mm. हर 2 दिन में जाके स्टोर में चेक करता था, और वो कभी नहीं आया वापस, वो एक बार जाने के बाद। पूरे 2 साल तक जब मैं वहाँ कॉलेज में था, कभी लौट के वापस नहीं आया वो उनके शेल्फ में। That sounds like a love story. यू वोंट बिलीव, मैं उधर इंटरनेट में ढूँढ रहा था उसका कहाँ है, वो वेज वाला, कि ऑर्डर करके मैं अमेज़न से या कहीं से मँगा लूँगा। मेरे को मिल गया वो ब्रांड के नूडल्स, बट वो आउट ऑफ स्टॉक थे हर जगह से, कहीं पे स्टॉक में नहीं था ऑनलाइन में भी। That day Uddu regretted not eating chicken. Actually, it's very interesting. The place that instant noodles have in our culture, क्योंकि they are supposed to be a food of convenience, but like something you settle for. But हुँ, people love it so much that see shops पे लोग बना के बेच रहे होते हैं उसे, and that's so bizarre. And uh, a lot of times that does taste better than scratch से बने noodles. हाँ। I do not know how to feel about that. जनरली यहाँ पे जो स्क्रैच से बने नूडल्स रहते हैं, एक तो वो बहुत मोटे मैदे का रहेगा, जो यू प्रीटी मच फील सिक, मतलब यू आर प्रीटी श्योर कि हाँ, अगर मैं स्ट्रीट के नूडल्स खाऊंगा तो 6 आउट ऑफ 10 टाइम्स यू विल गेट सिक। उनके नूडल्स की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। What एंड the hell are you talking about? नहीं, लाइक अगर तू पॉपुलर जगह से खाएगा तो बात अलग है, बट जनरली जो स्ट्रीट के ऐसे ही नूडल्स बना के खिलाते हैं स्क्रैच से, वो दे आर प्रीटी अनहेल्दी। I think I have not really gotten that much sick from street food. एक बार मुझे I think मेरी पूरी फैमिली को फूड पॉइजनिंग हो गई थी फ्रॉम ड्रिंकिंग गन्ने का जूस एक जगह से, बहुत पहले की बात है, बट आई थिंक उसके अलावा also I mean I probably don't have as much experience with street food as you, लाइक so मैं that ऐसा नहीं could बोला तू also be. खाएगा तो एकदम ही बीमार पड़ जाएगा, बट लाइक यू डोंट फील हेल्दी एटलीस्ट खाने के बाद, दैट व्हाट अ, आई कैन से। अच्छा तो वो कह रहा है लाइक इट फील्स हेवी। हाँ, हेवी और तो अनहेल्दी फील जैसा नहीं होता, ऑयली और ज्यादा उस टाइप का खा के, स्लाइमी क्या आई बोले। मीन it's noodles. I go in with that expectation. नहीं, बट तेरे को मैगी खा के वो फील नहीं आएगा उतना कंपैरेटिवली, दैट्स द थिंग आई वाज सेइंग। सच में I have not noticed that difference क्योंकि लाइक मैगी या नूडल्स से मुझे आई डोंट थिंक कभी इतना वो सिकनेस वाली फीलिंग आती है, बट
I'm thinking about the kind of feeling I get from eating dal bati. Hmm. I love dal bati, but that's the most uh sickening food. I mean, I that does not sound like a good descriptor. Like you feel way too full after eating it. I was not talking about feeling full, but feeling unhealthy. Uh, तो अगर स्ट्रीट नूडल्स खाएगा तो कई सारी जगह पे वो ओवरली स्पाइसी और बहुत वैसा बनाएंगे एकदम काला टाइप का टू मेक इट मोर लाइक एकदम कैसे अपील करने के लिए अच्छा है लाइक दे नो कि यू नो इट इज अनहेल्दी बट यू विल ईट इट एनीवे I don't know. तूने I've never felt that. तूने कभी वो काले वाले नूडल्स नहीं खाए स्ट्रीट के दैट यू नो आर वेरी अनहेल्दी देख, मैं कभी नूडल्स खाता हूँ बाहर स्ट्रीट पे, which has been a pretty rare thing to happen. But uh, it's dark enough that I cannot spot the colors properly. हम्म I mean, क्योंकि रात में ही होता है ये सब. व्हाट इज योर But I फेवरेट told you हाँ about हाँ हाँ recently कुछ महीने पहले मैं मोदी नगर गया था. वहाँ पर my cousin took me to this noodle shop. वहाँ पे ऐसे कुछ 5-10 रुपए में वो भर के प्लेट नूडल्स दे रहा था वो. उस वेज नूडल्स थे, उसमें सोयाबीन था. हाँ That was the best noodles I've ever had. Best chow mein I've ever had. That was so good. ऐसे ही होता है हमेशा जो बेस्ट शॉप्स होती है वो कहीं ऐसी कोने में छुपी हुई एकदम सस्ते में एकदम भर के खाने वाली देंगे और इट आउटस्टैंडिंग होगा हमेशा ऐसे ही रहा है मेरा चाइनीज का एक्सपीरियंस कहीं भी एकदम रिनाउंड जगह से मेरे को अच्छा चाइनीज नहीं मिला है Yeah, क्योंकि like big shops, I presume, tend to play it safe. They like हाँ try to cater to everyone. But in shops, maybe they get like धीरे-धीरे they get popularity. भीड़ लगी रहती है वहाँ पे भी as people start recognizing the shop. But हाँ yeah, ग्रेट it's frustrating how like difficult it is to find good street food. क्योंकि uh, I think I personally think that I'm a decent judge of restaurants and what might be a good place to eat without even before even going there, like what places I should visit and what places I should not visit. But I absolutely cannot do that for street food. That I think is a skill I would love to have, but I yeah. सो आई वाज How do you आस्क feel हाँ about your ability to judge कहाँ पे खाना है स्ट्रीट फूड? ओके तो बहुत टाइम से तो मैं नहीं खाया हूँ उतना ज्यादा स्ट्रीट फूड बट फिर भी जनरली लाइक जो एक अच्छी स्ट्रीट फूड रहेगी उसमें एक क्वालिटी रहती है कि दे हैव कैसे बताऊं तेरे को उनका सेटअप अच्छा रहेगा लाइक वो एक बड़ी शॉप में नहीं होगी वो कहीं पे ऐसा सेक्लूडेड सी जगह भी हो सकती है बट लाइक दे विल हैव प्लेस फॉर यू टू सिट एंड दैट मीन्स कि दे एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स उस जगह पे Hmm, क्योंकि कई सारे interesting. स्ट्रीट फूड होगा जो भले ही ऐसा छोटी सी शॉप होगी बट वो वहां पे देखेगा लोग ऐसे खड़े होके खाते रहते हैं एंड दैट मीन्स कि वो ज्यादा कस्टमर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कुछ एक दो चलते फिरते आके खाते हैं जो पॉपुलर स्ट्रीट फूड की जगह होती है वो सेटअप बना कर रखेंगे हाँ वो एक साथ भीड़ को हैंडल कर सके वहां पे दैट वन थिंग आई नोटिस्ड एंड
दूसरी चीज, आ, हाँ, उनके पास जनरली ज्यादा मेन्यू में आइटम्स नहीं होंगे, मतलब उनकी कुछ सिलेक्टिव चीजें ही बनाएंगे। जैसे अगर चाइनीज से रिलेटेड है, देन दे विल मेक नूडल्स, फ्राइड राइस एंड सम रोल्स आई गेस, एंड दैट्स इट। कोई ज्यादा वैरायटी नहीं That is रखेंगे। actually a great sign everywhere. A small menu, a limited menu. हाँ। मुझे नहीं खाना शेजवान नूडल्स, डबल शेजवान नूडल्स। हाँ। एक बना के दो बस। आई गेस हाँ, फिर बाकी तो वही है कि हाँ, कम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी देते हैं उनका, एंड भीड़ लगी रहेगी शॉप पे। Actually, that's one of the things. I also do not trust people to recommend me street food properly. क्योंकि in my experience, I don't know. I just there's a lot of disassociation हम्म। uh, between my taste and people who uh, are into street food and eat it frequently. Because the places they recommend a lot of times are not that special. I mean, they're all right, but I don't feel special about them. हम्म। तो कुछ कह रहा था इस बात के पहले I interrupted you. हाँ, मैं पूछा तेरा फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है? Hmm, that's hmm. I'll have to think about it because I've not had itna street food as I've told you. Because I think uh, my mom is very hygienic and cautious उस मामले में. I think he does not like the idea of street food. If you remember, तू मेरे घर आया था एक बार, हम लोग फ्लैट में रुके थे and we had कोई चाट कहीं नीचे जाके, हाँ। and I was so surprised by, like, it was a few years ago, I think. I was so surprised that my parents got angry with me when I told them that कि कहीं से भी खा लिया. हाँ। I was really surprised. I was not expecting that reaction. हम्म। Uh, yeah. So why don't you tell me yours and I'll think about it. तो मेरा तो थोड़ा ब्रॉड आंसर है, बिकॉज अगर मैं मम्मी के साथ बाहर जा रहा हूँ, तो मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है पानी पूरी खाना। एंड मेरी लोकेलिटी में आई थिंक हम सारी पॉपुलर पानी पूरी वाली जगह एक्सप्लोर कर चुके हैं, इसी कारण से कि कहीं भी बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग वगैरह कुछ मम्मी को करना था, उनने कर लिया, एंड देन वी थिंक कि हाँ कुछ खा लेते हैं, तो हम अलग अलग ढूंढेंगे पानी पूरी वालों को और उनकी पानी पूरी ट्राई करेंगे। मेरे को पर्सनली But पानी पूरी इतनी कुछ स्पेशल नहीं लगी, बट ओवर टाइम आई थिंक आई हैव डेवलप्ड अ लाइकिंग टू इट। I would like to add my comments on Pani Puri. हाँ। I genuinely do not understand Pani Puri. I हाँ। Okay, people are Pani Puri fanatics. Uh, and it's nice to see people like it so much. The only Pani Puri I can have is the mixture of वो तीखा मीठा वाला पानी, which is हाँ। nice. I will admit that is really nice. हाँ। But I cannot have anything other than that. It's not that I don't like it. I dislike anything other than that. I dislike the tikha par whatever variety of options they have. Mint wala pani, पता नहीं क्या क्या होता है.
I really do not like it, and I don't understand how people like it. दैट्स Do you? आई एम टेलिंग यू, मेरे को पहले अच्छे नहीं लगते थे, पर मम्मी ने मेरे को पकड़ पकड़ के खिलाया कि खाओ तुम भी खाओ, एंड ओवर टाइम यू डेवलप अ टेस्ट फॉर इट, आई एम टेलिंग यू, सरप्राइजिंगली. I mean, I find it like, okay, I am a person who likes to develop a taste for things, but I find it almost too appalling. I feel that I won't develop a taste for that. I dislike it enough that I don't think I'll develop a taste for that. दैट्स व्हाट आई फील अबाउट कॉफी. I mean, it's fair. सो दैट वाज पानी पूरी. उसके अलावा यू नो आई लाइक चाइनीज. तो अगर मेरे को स्ट्रीट फूड कुछ खाना है, हम्म I won't eat चाउमीन और नूडल्स जनरली स्ट्रीट फूड में. आई वुड ओनली ईट नूडल्स अगर मेरे को पहले से पता है कि उस जगह का अच्छा है. बिकॉज जितने चाइनीज के से दो तीन चार चीज हो सकती है, राइट? देर इज नूडल्स, देर इज फ्राइड राइस, देर इज वेज रोल, एंड देर इज मोमोज. उन सब इन चारों में जनरली नूडल्स के अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम रहती है, फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन. सबसे कम चांसेस नूडल्स के रहेंगे. उसके बाद मोमोज भी बहुत रेयरली अच्छे रहते हैं, अनलेस इट्स बहुत पॉपुलर कोई शॉप हो, इनकी रेप्यूटेड हो. उसके अलावा उनके मोमोज अच्छे नहीं रहेंगे. एंड देन देर इज रोल्स, एंड द मोस्ट यूनिवर्सल आई थिंक इज फ्राइड राइस. फ्राइड राइस जनरली हर जगह के ठीक ठाक ही रहता है. तो आई वुड यूजुअली स्टिक विथ आइदर रोल और फ्राइड राइस अगर मैं कोई नई जगह का ट्राई कर रहा हूँ तो. So like based on that, you try आगे देखता है नूडल्स ट्राई करने चाहिए हाँ, कि नहीं. हाँ, अगर मेरे को अच्छा लगा, मान लें फ्राइड राइस खाया मैं, मेरे को लगा कि हाँ ठीक था, देन आई कैन गेट सम नूडल्स. और इवन हाँ, एक्चुअली मैं मंचूरियन भी बहुत टाइम से खाना बंद कर दिया, क्योंकि उसका भी, मंचूरियन का भी यही है कि बहुत रेयरली वो अच्छा रहता है स्ट्रीट फूड में. I have noticed that about Manchurian. Okay, I feel that it used to be better than what you're usually served now. हाँ, मंचूरियन में हाँ वही है. अब पता नहीं व्हाट हैपेंड कि उसका पूरा टेस्ट अब हर जगह एकदम ही बहुत ज्यादा मीठा कर देंगे, जबरदस्ती का बहुत ही ज्यादा, या तो मीठा? हाँ, स्पाइसी और मीठा का मिक्स टाइप का नहीं होता, उस टाइप का. I ओह अच्छा वो हाँ हनी चिली टाइप का. नहीं, केचप टाइप का फ्लेवर. हाँ ओके ओके मेक सेंस या. वो आई डू नॉट लाइक दैट. मेरे को वो वाला फ्लेवर नहीं, मेरे को थोड़ा जो काले कलर का और जो स्पाइसी वाला फ्लेवर जो रहता है वो बेटर लगता है मेरे को. बट जैसे मैं घर पे भी देखा हूँ मम्मी अगर ट्राई करते चाइनीज बनाने का तो वो बहुत सारा केचप डाल देंगे, बस यही सोच के कि हाँ स्ट्रीट फूड में सब केचप भर के वैसे फ्लेवर ले आते हैं. बट नहीं अच्छा लगता मेरे को उसका वो बेटर लगता है जो प्रॉपर उसका रेसिपी फॉलो करके वो जो उसका फ्लेवर लेके आते हैं मसाले के थ्रू. It's really interesting how I mean something as simple as Chinese is so difficult to find of quality. हाँ. नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, आई सेड कि फ्राइड राइस जनरली डिसेंट रहता है. और मेरे को अभी मेमोरीज आ रही कि नहीं, मेरा ये वाला चीज भी अजम्पशन कई बार गलत प्रूव हो चुका है. वो फ्राइड राइस के नाम पे कई जगह पे एकदम ब्लैंड राइस विद सम वेजीज स्प्रेड ओवर इट दे देंगे, विदाउट एनी फ्लेवर. ऐसे एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं मेरे कुछ.
एक्चुअली दैट वाज मोर द केस इन सिक्किम, क्योंकि वहां पे स्पाइसी उतना ज्यादा नहीं खाते थे वहां के लोकल लोग। तो तुम फ्राइड हाँ राइस मंगाओगे तो तुम्हें विदाउट एनी स्पाइसेस ऐसे ही राइस विथ वेजीज दे देंगे और बोलेंगे फ्राइड राइस ही। इवन नूडल्स एकदम ब्लैंड थे वहां के सिक्किम के। मोमोज में ठीक है चटनी रहती है तो यू कैन गेट सम टेस्ट फ्रॉम इट। एंड रोल आई थिंक, हाँ रोल बेस्ट था, इसलिए वहाँ पे मेरे कॉलेज के बाहर खाने आते थे। आई वुड जनरली पिक वेज रोल। हाँ, वेज रोल मतलब स्प्रिंग रोल टाइप का। नहीं, नॉर्मल जो पूरा बड़ा सा रोल रहता है, हाँ ओके। दैट इज जनरली गुड। मे हम्म। बी एक्चुअली अब मेरे को याद आ रहा है, नहीं वो भी बहुत खराब। I think maybe somehow it feels that Chinese is taken for granted a lot of times. हाँ, Because people just have noodles here, Chinese. People don't hate noodles. People don't mind noodles. People are not really looking for especially good noodles, I think. हाँ, Maybe that's why. मेरे को एक मेमोरी याद आई अभी। कॉलेज में मैं था तो एक जगह से मैं रोल ऑर्डर करा था, वेज रोल, एंड दे हैड पुट बीट रूट इन इट। डू यू नो व्हाट बीट रूट Uh, इज? yes. उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है राइट, खुद का। एंड एट फर्स्ट आई वाज सरप्राइज्ड कि रोल में बीट रूट कौन डालता है। बट इट वाज एक्चुअली अ वेरी यूनिक फ्लेवर, और मेरे को अच्छा लगा वो कि वो ऐसा ट्राई कर रहा है उसके फ्लेवर के साथ खुद का बनाने का। इट वाज प्रेटी नाइस एक्चुअली। I have used beetroot in cooking a dish पहले। हम्म। मैंने वो बनाया था। What do you call them? Fuck. What do you call them? मैं भूल गया। किसे? कैसे दिखते आ, हैं उसको डिस्क्राइब कर थोड़ा। आ, अरे वो जो फ्राइड तली हुई चीजें होती हैं। अच्छा, बहुत सारी फ्राइड चीजें होती भाई। लाइक kebab, is it called kebab? हैं? Think so. जो स्कीवर्ड रहती है वो होता है ना कबाब तो। नहीं, skewered नहीं। तो No. I'm forgetting. सिजलर No. अरे वो ट्रेन्स में मिलता था पहले। है, ट्रेन्स में? वेट व्हाट? नाउ आई एम कंफ्यूज्ड, ट्रेन में क्या मिलता है भाई? How can I forget it? Cutlet, veg cutlet. कटलेट? व्हाट? तो कबाब से कैसे कंफ्यूज करा कटलेट को? I was just मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया था। That's the closest thing I could remember. Cutlet, veg cutlet. कटलेट तो पोटैटो का बनता है ना? Not necessarily. हाँ। तो मैंने उसके लिए अ, गाजर और बीटरूट आधा-आधा घिस के कंबाइन किया था। बहुत सारा बनाया था। It was really tasty. ओह नाइस। ए इतने खाने की बात कर रहे, भूख लग रही है अब मेरे को। वो तो खा के बैठा है इसलिए। तो वो याद है पहले भी आई थिंक सेम इशू आता था, रात में हम ऐसे ही बात करते रहते थे एंड आई वुड थिंक कि हाँ भूख लग रही है मेरे को, मैं अपने ऊपर वाले रूम में हूँ, मैं कुछ खा भी नहीं सकता यहाँ से। I remember. तो कुछ रखने लगा था ना खाने को। हाँ। कप नूडल्स टेस्टिंग का टाइम आ गया तेरा। केटल खरीद ले। I was
saying that. Hmm. और कोई स्ट्रीट फूड बचा है तेरा? नहीं नहीं, मेरा हो गया। Let me see. I don't, since I don't like इतना मैं street food नहीं करता हूँ, so I cannot really tell you my favorite street food because I don't think I have one. I think I will try to tell you about my memorable street food experiences, हम्म। या फिर when it has surprised me. We've talked about vada pav. यस। I feel that it's a bizarre concept क्योंकि you're putting a batter over aloo to go with the aloo. You make a vada. That is a self-sufficient dish. The batter is supposed to be like a bread. और तुम उसको भी ब्रेड के बीच में डाल दोगे। आई हैड द सेम रिएक्शन जब मेरे को पहली बार वड़ा पाव के बारे में पता चला। आई थिंक मैं बहुत ओल्ड था एक्चुअली, मेरे को बहुत बाद में पता चला वड़ा पाव का एग्जिस्टेंस के बारे में। वो जो इंदौर का छप्पन नहीं है, तो वहां पे कोई वो था, कोई फेमस वड़ा वाली जगह था, वही आई थिंक मेरे को वही से पता चला था पहली बार। एंड आई वाज सो कंफ्यूज्ड हाँ। बाय इट्स कंसेप्ट। सो वड़ा पाव मैंने वहाँ, फिर मैं गुजरात गया पढ़ने, एंड यू नो इट्स adjacent to Maharashtra. Maharashtra में वड़ा पाव is popular, हाँ। and Mumbai में and there is a lot of influence of Maharashtra on Gujarat. I feel हाँ। वहाँ पे भी vada pav was quite popular, but the kind of vada pav I found in Gujarat was very different from the kind of vada pav I found in Mumbai. हम्म। Like uh, they were they would मतलब पहले से फ्राइड होता है बड़ा, बट वो फिर से मसाला बना के एक पैन के ऊपर they would fry it again, and ब्रेड को भी they would fry. You usually do not fry the bread in vada pav, right? हाँ। It's supposed to be वो convenience वाला food, you can eat it while walking. Actually वहाँ पे मेरे कॉलेज के पास there was this really nice vada pav shop. I tried it for the first time वहाँ पर, ये मसाला वाला, and I have not really tried vada pav इसके पहले इतना. I think एक बार try किया होगा and I was disappointed by it. हम्म। And उसके साथ वो कुछ चटनी भी देते हैं, and I really liked it. And I'm reminded now, like if we were talking about sickening food, हाँ। that was sickening food. Like vada pav इतना बड़ा नहीं होता. It's not that you would feel heavy because of it, but it always give me ये acidity वाली feeling for some reason as soon as I ate it. हाँ। Like that was not a very nice feeling, but I still kept having it from time to time. हम्म। It was nice. फिर मैं you have something to say? नहीं नहीं, बोल बोल। फिर मैं मुंबई गया कुछ साल बाद, एंड वहाँ पर one of my wi- one of the things in my wish list was have good Mumbai ka vada pav. I ate vada pav in many different places.
I did ओह not like any of them. बट एक रात को अ, अपनी बिल्डिंग के नीचे आई वाज वॉकिंग रात को एक वड़ा पाव वाले की स्टॉल खुलता है वहां पे वो स्टॉल वहां पे नहीं रहता पूरे दिन हम्म रात को इट समहाउ एकदम से अपीयर्स लोग रहते हैं आसपास काफी उसके आए मैं हिम्मत हारा हुआ सोचा एक और बार ट्राई कर लेता हूँ आई ट्राइड वहाँ का वड़ा पाव दैट वाज अ नॉर्मल वड़ा पाव बिना फ्राइड इट वाज रेगुलर ब्रेड ड्राई हाँ एकदम हाँ एंड दैट एंड अ वड़ा पाव इज आई गेस एज गुड एज इट्स आलू क्योंकि और कुछ तो होता नहीं है उसमें बनाने का हाँ दैट वाज रियली गुड वड़ा पाव हम्म लाइक वो छोटी सी शॉप which appears suddenly in the dark वो भी मेरी बिल्डिंग के immediately next to my building that was really nice आई डू थिंक कि जो फूड है स्पेशली उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि द प्लेस वेयर यू आर हैविंग इट और उसका आसपास का एनवायरनमेंट और पूरा सेटिंग उसका लाइक ठीक मेरे को पता है रेस्टोरेंट्स इसके लिए बहुत चार्ज करता है कि हाँ वो पूरा उसको एज अ कोजी और लग्जूरियस बनाते हैं अपनी बिल्डिंग को फिर उसका चार्जेस वो फूड में ऐड कर देते हैं पूरा उसके लिए बट जैसे तू ये वड़ा पाव के बताया कि इवन तो वो खुद में उतना कुछ स्पेशल ना हो बट जो सेटिंग में था कि वो रात का टाइम या अंधेरे के टाइम पे अपीयर होता है वो और जिस नेबरहुड में था वो उसमें अलग ऐड करता है उसके फ्लेवर में उस चीज खा रहे हो उस it पूरे एक्सपीरियंस में yes I will agree with you it does add to it but don't let that take away from the genuine goodness of that vada pav I had it multiple times uske baad हाँ and compared like क्योंकि the other places I had vada pav, they were like very boring and uninteresting. Like that Mumbai is crazy about their vada pav. हाँ I did not understand it. Simple से सड़ा हुआ dish के लिए. How can somebody be so? How can this entire population be so passionate? Because I did go to popular vada pav restaurants too. I guess जहाँ पे like they were known for giving decent vada pav. I didn't find them special, but this was genuinely good, and not for a vada pav. It was a nice thing to have in general. हाँ That reminds me, Johnny Hot Dog in Indore. हाँ how do you feel about it Okay, I still understand Pani Puri. I I can still understand Pani Puri. It's just something I do not like. I can understand maybe how can some people can have different tastes. I have no understanding how Johnny Hot Dog के बाहर इतनी भीड़ लगी रहती है consistently. मेरे को भी नहीं समझ में आया इतना बोरिंग सा सैंडविच बना के देता है वो. यस It's not that it's bad. ब्रेड के बीच में कुछ तो भी दबा के दे देता है. It's so वो आई थिंक that's उनका कुछ वो ऐसा इफेक्ट वो जो नहीं होता प्लेसिबो इफेक्ट कि सब भीड़ लगी हुई है मतलब इट मस्ट बी समथिंग स्पेशल इवन दो इट इज नॉट I feel that like I should still hear some people criticizing it. Okay, like क्योंकि even like I hear people criticizing even good places, even places I like it's overhyped वगैरह. But I don't really see people criticizing Johnny Hot Dog. People क्योंकि
भीड़ जो वहाँ पे बाहर लगी रहती है जॉनी हॉट डॉग के। हाँ, I mean, I can understand what you said for tourists. ठीक है, they come and they think ये popular जगह है, they should have it. But इतनी consistently जो बाहर उसके भीड़ लगी रहती है, I would think कि most of them are Indoris. हाँ। Like they are repeat customers. I'm genuinely surprised by that. I will tell you what might be a case to it. जैसे मैं छप्पन जाता था, मेरे पापा मम्मी मेरे साथ में, उनको खाना स्ट्रीट फूड के, स्पेशली मेरे पापा को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब खाना इन जनरल उनको बहुत इंटरेस्ट है, राइट? बट हम्म तू देखेगा जो जनरली जैसे पेरेंट्स होते हैं, मतलब मिडिल एज के लोग, वो बहुत कॉशियस रहते हैं कि वो हेल्दी फूड खा रहे कि नहीं, और वो हाइजीनिक जगह से खा रहे कि नहीं, एज यू सेड। हम्म जॉनी हॉट डॉग का एक तो देखेगा मेजर फैक्टर है कि वो जो वो बनाते हैं हॉट डॉग, इट इज सो सिंपल कि इट डज नॉट फील अनहाइजीनिक और अनहेल्दी एट ऑल। तुम सिर्फ दो ब्रेड के बीच में एक वो आलू का पीस लगा के दे रहे हो, एंड दैट इज ऑल। उसमें ज्यादा कुछ मसाला इन्वॉल्व नहीं है, कोई तेल ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ एक ब्रेड और एक आलू का पीस है उसमें। अरे वो उसमें कुछ सॉस तक नहीं डालता कोई। एग्जैक्टली exactly. तो आई थिंक समथिंग विच हैपेंस इज कि जो सब मिडिल एज के लोग आ रहे हैं, वो इतना पूरा हाइप बना हुआ स्ट्रीट फूड के लेके उस पूरी जगह पे, वो खाना चाह रहे हैं, बट दे आर हेजिटेंट कि हाँ मोमोज में लाइक ठीक है, कुछ ज्यादा ही चिली वगैरह हो सकती है, वॉट एवर, या फिर फ्राइड राइस में अनहेल्दी ऑयली होगा या वॉट एवर। जॉनी हॉट डॉग, दे हैव एन एक्सक्यूज कि वो पॉपुलर है फॉर सम रीजन, और दूसरा इट लुक्स प्रिटी हेल्दी, उतना सिंपल फूड है, इट प्रोबेबली कोई ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो मेरे पापा का हमेशा वो पहली स्पॉट होता था खाने का, जॉनी हॉट डॉग, कि वो एक डायरेक्ट चीज है कि हाँ वो, आई थिंक वो चीप भी था, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता वो, कि हाँ इसको आप खा सकता है, यू यू कैन हैव इट एज अ स्टार्टर। जैसे वो तूने देखा लोग खाते हैं वो पापड़ एज अ स्टार्टअप, वो मसाला पापड़ एट रेस्टोरेंट्स, इवन दो इट सक्स आई थिंक पर्सनली, बट ले लेते हैं मसाला पापड़। आई थिंक इट इज ईटन इन दैट सेंस वहां पे। हम एक बार मुझे यश ले गया था छप्पन to show around street food. हाँ, One of the things we had, like he made me try a lot of wonderful things that day. But one of the things he had was from Johnny Hot Dog. This was my second time eating from there. Pehli baar हाँ, I had been disappointed. He ordered an egg benjo, I think. हाँ, Uh, that was like वहाँ पे खड़े-खड़े it seemed like बहुत सारे लोग वो वही ऑर्डर कर रहे थे. It seemed like one of their popular dishes. हाँ। तो गेस मुझे हाथ में क्या पकड़ाया? वेट, व्हाट एग्जैक्टली इज 2 अ ब्रेड बेंजो? It's just a sandwich, kind of like वो पाव के बीच में हाँ, जो वो देता है। हाँ। उसने मुझे 2 पाव के बीच में एक ऑमलेट दबा के दे दिया। हम्म। I'm not saying that's a bad dish. It's simple. कभी-कभी मैं घर पे इतना सिंपल बना के खा लेता हूँ and it makes me feel nostalgic for some reason. But दैट्स लाइक किसी मैगी की दुकान इतनी पॉपुलर हो जाना कि उसके सामने भीड़ लगे। ऐसा भी नहीं कि वो सुट्टा मिलता है। You think by मैगी the की दुकान पे तो फिर भी सुट्टा मिलता है, चाय मिलती है। क्या बोल रहा है? you think उस उनके जो शॉप की जो फैंसी नाम है डिशेस के, दे प्ले अ रोल लाइक हॉट डॉग और बेंजो, लोग आके सुनते हैं, उनको लगता है हाँ कुछ खतरनाक स्पेशल होने वाला है।
भाई Even though, पहले तो it's not a hot dog. Let's हाँ, not call it a hot dog. उसके नाम में तो है ना हॉट डॉग। पहला डिसअपॉइंटमेंट तो वहीं से होता है, तो प्लेट में आता है तो हॉट डॉग मांगा था. It's fine. Uh, anyway, enough shitting on Johnny Hot Dog. Yash likes it. I tried to understand why. I don't remember what he said, but I couldn't understand why. Like it's not bad, I would agree कि वो बुरा नहीं है, but it has nothing special in it either. Like, no, that's my point. It's not bad, and that's more perplexing. Because pani puri has an extreme flavor, and I can understand people liking something I dislike, but हाँ, I really struggle to understand people really liking something I find mediocre. हाँ. Uh, and like while we are on Vada Pav in Gujarat, I also had dabeli वहाँ पर. दाबेली. Uh, कई जगहों से. You know what dabeli is? हाँ, मेरे पापा लाते रहते हैं अभी भी घर पे. I despise it. I mean, maybe because I do not like sweet stuff, or I don't know why, but I hate dabeli. I had it in Gujarat, hoping कि गुजरात क्योंकि वहाँ की डिश है, maybe वहाँ की अच्छी लगेगी. I don't know. I like हम्म. it. Like I guess I feel the most like if I have to uh, point at a street food, क्योंकि you know that I used to really not like Chinese. हाँ. बचपन में that was not my thing. I developed to like it slightly more. सब कुछ. Manchurian actually, sorry, Manchurian nahi, momos I started liking recently when I had a good Manchurian in Arunachal Pradesh पिछले साल. हम्म. But I really did not like fried rice. I still don't like fried rice that much. Noodles, either I didn't like noodles. But I've started liking them more. कभी अच्छे मिलते हैं तो I've been more open to it. But I don't feel nostalgic about it, but I do feel nostalgic about samosas. हम्म. क्योंकि uh, and while we are at it, poha is usually I don't see it as a street food because most of the times I've had street poha in my life that's been made at home. So it does हाँ. not feel like street food. बट आई वुड से कि जितना इंदौर के पोहे खाया हूँ मैं स्ट्रीट वाले, दे आर प्रेटी गुड, लाइक जेन्युइनली गुड यहाँ के. Some people would like to disagree with you, हाँ. but I don't. I don't disagree with you, Prospect. Because, and I understand where that disagreement comes from. People just hate poha. Uh, Samiksha absolutely hates poha, हाँ. probably because क्योंकि लोगों के घर पर इतना ज़्यादा people are obsessed with poha that they have to eat it every morning pretty much, and you start hating something like that, and that's understandable. हम्म. I used to feel that way about poha because my dad was obsessed with poha. हम्म. But yeah, but nobody can take away the fact that Indore ka poha is pretty unique. हाँ. Like it's sweet, it tends to be slightly sweet. एंड देन फिर मेरे मामा उसमें पूरा जीरा मन डलवाएंगे, फिर उसमें पूरा सेब डलवाएंगे, फिर उसमें प्याज वगैरह डलवाएंगे, Yes. मटर डलवाएंगे. Hmm. Save actually. And yeah, like it complements poha pretty well. Save.
हाँ. surprisingly. uh, yeah, like uh, that was my like yeah, I liked samosa or kachori bachpan mein. Although I learned to like kachori too somewhat. I will tell you like एक और experience of street food to end this. Uh, when I was in Bangalore, वहाँ पर there are a lot of stalls like which sell 100 varieties of dosas. ऐसा कुछ नाम रहते हैं उनके. ओ भाई. Like they sell dosa as street food वहाँ पर. हम्म. And I look at that shop and I would be like, I mean, yeah, it seems gimmicky. It does not seem like that food will be good. हम्म. It was surprisingly good. आई I नेवर लाइक डोसा. बस मतलब मेरे मम्मी को अच्छा लगता है, मेरे पापा को अच्छा लगता है. मैं अभी कोलकाता गया था. वहां पे हम बाहर जा रहे थे तो सब डोसा ऑर्डर करे थे. एंड मैं ट्राई करा, सब बोल रहे बहुत अच्छा है, कितना अच्छा डोसा है. मेरे को नहीं समझ में रहा हाउ डू पीपल लाइक डोसा. मेरे को आज तक समझ नहीं आया व्हाट इज द अपीलिंग अबाउट look, डोसा. डोसे के काफी टाइप्स होते हैं. आलू वाला डोसा feels pretty boring to me too. Like it's not that interesting. But I मुझे याद नहीं आ रहा उसे क्या कहते हैं. प्लेन एक डोसा. प्लेन नहीं. हम्म, हाँ. लाइक वहां पे स्टॉल्स पे तो हर टाइप की फिलिंग भर देते थे उसमें. हम मसाला डोसा. मसाला डोसा तो वो आलू वाला होता है. हाँ. और कौन सा, ये दो मेन डोसा होते हैं ना, फिर एक वो बड़ा अरे वाला उसमें होता है. कुछ भाजी सी डोसा भाजी सब भरा होता है. भाजी. व्हाट. आई हैव नो लाइक आइडिया. उस I don't remember what it's called, but yeah, I had that in Bangalore a lot, and that was really good. हम्म. उसके अलावा वहाँ पर I also had a lot of idli. Idli is a prominent street food in Bangalore as well, हाँ. which was nice. I'm not that fond of idli. And उसके अलावा like Bangalore में found this specific kind of idli called thate idli, which I'd never heard of before. It मेरे को. was so soft. उसका shape पूरा अलग सा होता है. It's huge, but it's so soft. It feels so different from the regular idli I have. Mysore masala dosa. ओ. हाँ. That's what I was talking about. That I like. हम्म. Yeah, I think that's pretty much all I can remember right now from my experiences in street food. हम्म. सो वैसे इस एपिसोड का होस्ट कौन है? That would be me. Okay. You were pretty excited कुछ दिन पहले about a chess event. Oh, yes. So, mm, Gukesh is officially the world champion, classical world champion. And Yay. काफी, have you heard about how the last match went?
नहीं। सो देख, जो पूरा टूर्नामेंट में 14 राउंड्स होता है, एंड अगर 14 राउंड में दोनों का स्कोर इवन है, 7-7, तो फिर एक 15th राउंड होता है अगले दिन, जो कि टाई ब्रेकर राउंड होता है, और उसमें कम टाइम में गेम्स होते हैं कि अ, पहले आई थिंक 20 मिनट्स का कुछ होगा, उसमें भी टाई हो गया तो फिर वो 5 मिनट्स का हो जाएगा, उसमें भी टाई हो गया तो फिर 1 मिनट का हो जाएगा, तो वो टाई ब्रेकर राउंड्स होता है अगले दिन. बट फॉर दैट यू मस्ट हैव इक्वल स्कोर एट द एंड ऑफ 14 राउंड्स. तो जो 14th राउंड था, लास्ट राउंड था, उस राउंड तक के पहले तक उन दोनों का स्कोर एकदम इवन चल रहा था. एंड जो 14th राउंड खुद था, वो पूरे टाइम एकदम ही इक्वल पोजीशन चल रही थी, कोई भी दोनों में से कोई भी कोई एडवांटेज नहीं गया था. एंड इवन एट द एंड, जब पूरा ट्रेड ऑफ होके वो एंड गेम में आ गए, इट वाज कंप्लीटली इक्वल पोजीशन. आई वॉज वॉचिंग द चेस बेस इंडिया लाइव स्ट्रीम, जहाँ पे वो स्ट्रीम कर रहे थे वो गेम्स को और डिस्कस कर रहे थे पोजीशन को. एंड उनने विश्वनाथन आनंद को बुलाया उनके स्ट्रीम में कि वो आके इनसाइड द पोजीशन के बारे में. विश्वनाथन आनंद आए, उनने बोला कि तुम लोग तो ऐसी हंसी मजाक करते रहो, ये पोजीशन में कुछ दम नहीं है, ये तो पक्का ड्रॉ होने वाला है. तो कमेंटेटर्स ने पूछा आपको क्या लगता है कितने परसेंट चांस है कि ड्रॉ हो जाएगा. विश्वनाथ आनंद बोलते हैं कि आई एम 99.27% श्योर कि ये ड्रॉ होने वाला है. ओके। ठीक है. फिर वो ऐसे डिस्कस करते रहते हैं. विषयानंद अपना पूरा अवार्ड्स का उनका जो रखा हुआ घर पे शोकेस वो दिखा रहे हैं आराम से, कैमरे से पूरा घुमा रहे हैं वो, मतलब अब पोजीशन डिस्कस भी नहीं करेंगे, कमेंटेटर्स पूरी तरीके से पोजीशन को छोड़ चुके हैं, ऐसी हंसी मजाक कर रहे हैं उनके साथ, वो अपना अवार्ड्स दिखा रहे हैं. वो चले जाते हैं आराम से पूरा 1 घंटा बात करके. फिर दूसरे ग्रैंड मास्टर आते हैं, विदित गुजराती नाम के हैं. उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, वो बोलते हैं हाँ ये तो ड्रॉ होने वाला है, और फिर वो ऐसे नॉर्मल हंसी मजाक कर रहे हैं. तो ऐसा हर जगह यही सब अज्यूम करके बैठा है, हाँ ड्रॉ ही होने वाला है. एंड इफ यू लुक एट प्रीवियस गेम्स, गुकेश ने सेम चीज करता हर एक गेम में, कि नो मैटर कितनी भी इक्वल पोजीशन, वो पूरा खेलते ही जाएगा बिना रुके, एकदम एंड तक, मतलब जहां पे एकदम होपलेस ना हो जाए कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, पोजीशन में कुछ बचा ही नहीं है, तब तक मुकेश खेलता जाता है. एंड द सेम थिंग वाज हैपनिंग इसी में, कि हाँ सब बोले कि हाँ ये तो गुकेश का स्टाइल है, फॉर सम रीजन वो खेलते चले जाता है. ऐसा बाय द वे, ऐसा बाकी चेस में बहुत लोग नहीं करते हैं ऐसा, वो बहुत जनरली लोग जल्दी ड्रॉ आपस में ऑफ करके एक्सेप्ट कर लेते हैं और गेम को खत्म कर देते हैं. एंड इवन इन दिस गेम, डिंग ने करीब 3 से 4 बार गुकेश को ड्रॉ ऑफर करा, और जिसमें हर बार गुकेश ने डिक्लाइन कर दिया, और वो खेले जा रहा है पोजीशन को. लास्ट में ऐसा होते होते ही एक मटेरियल ये था कि गुकेश के पास 2 पॉन्स थे, एक ऊंट था और एक हाथी था. डिंग लेरिन के पास एक पॉन था, एक ऊंट था और एक हाथी था. एंड इट इज ऑब्जेक्टिवली अ सिंपल ड्रॉ, बिकॉज इवन तो गुकेश के पास 2 पॉन्स है, वो इट वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ डिंग्स 1 पॉन एंड किंग. तो मतलब एक पॉन तो एक्सचेंज रहेगा, दूसरा पॉन को किंग आराम से ब्लॉक कर देगा. बट क्योंकि अब डिंग लिरन बार बार ड्रॉ ऑफर कर रहा है, मुकेश मना कर दे रहा है, डिंग लिरन रुक्स को आमने सामने रख रहा है कि वो एक्सचेंज हो जाए रुक्स और गेम ऑब्जेक्टिवली ड्रॉन हो जाए. गुकेश वो भी ड्रॉ एक्सेप्ट नहीं कर रहा. तो एट दिस पॉइंट डिंग ऐसी शफल कर रहा है अपने पीसेस को आगे पीछे, मतलब कुछ पोजीशन में चेंज भी नहीं कर रहा, वो बस वेट कर रहा है कि हाँ कब खत्म होगा ये गेम. एंड इन डूइंग सो, अब वो सोचता है कि हाँ वो ऐसे शफल करते करते उसका ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो अपने बिशप को वो एक कॉर्नर पे रख देता है एकदम बोर्ड के. एंड कॉर्नर में रखता है, छोड़ देता है उसको, फिर वो अपना रुक शफल कर रहा है इधर से उधर.
और इन ही सेम फैशन वो अपना रुक को ट्रेड ऑफर करता है, क्या रुक एक्सचेंज कर लो, एंड विदाउट इवन नोटिसिंग इट ही ब्लंडर्स द गेम, बिकॉज उस पोजीशन पे गुकेश अपना अगर रुक एक्सचेंज करता है, और क्योंकि डिंग का जो बिशप वो कॉर्नर पे है, तो दैट मीन्स गुकेश कैन फोर्स एन एक्सचेंज ऑफ बिशप। अगर वो बिशप कॉर्नर पे नहीं होता, देन जो डिंग है वो अपना बिशप को एक्सचेंज नहीं होने देता, एक पॉन को दूसरे पॉन से एक्सचेंज हो जाता, और दूसरा जो बिशप है, वो जो बचा हुआ एक पॉन है, उसको सेक्रीफाइस कर सकता है उसके लिए डिंग, कि वो बिशप से उसका पॉन मार देगा, फिर गुकेश के पास एक बिशप और एक राजा बचेगा, राइट, एंड यू कैन नॉट चेकमेट विद जस्ट अ बिशप, वो ड्रॉ हो जाता ऑटोमेटिकली। बट बिकॉज उसने अपना बिशप कॉर्नर पे रखा था, तो वो अब अपने बिशप को एक्सचेंज को हटा नहीं सकता, एंड इट हैपेंस सो दैट कि वो जो पोजीशन थी एग्जैक्ट जहां पे वो अपना बिशप फोर्स करेगा एक्सचेंज के लिए, वो एक विनिंग एंड गेम था गुकेश के लिए, एंड दैट्स हाउ गुकेश वन। कि Oh, जिसको जिस पोजीशन पे सबने अज्यूम कर लिया कि ड्रॉ हो चुका है, डिंग एक वन मूव ब्लंडर करता है, मतलब उसके पहले तक एकदम ड्रॉन थी और एक मूव में कंप्लीटली हार गया वो उसमें, उस पोजीशन को। I And guess Gukesh had nothing to lose uh, खेलने में, uh, you would think so, like but if you look at his previous games where he's declined a draw, वो अपनी वर्स मतलब ऐसी पोजीशन जिस पे वो वर्स है, डिंग बेटर है, उसमें भी ड्रॉ डिक्लाइन करके खेलते जाता है गुकेश। गुकेश से इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप आपकी पोजीशन बुरी तब भी आप क्यों खेलते हो, तो ही जस्ट सेज कि आई वुड लाइक टू, इफ आई कैन कीप प्लेइंग आई विल कीप प्लेइंग इवन दो, इवन इफ आई डोंट हैव एनी चांसेस। उसकी ये स्ट्रेटेजी रहती है। hmm, you clearly get to see personalities of players seep, seeping into the games. हाँ, आई आई थिंक वही है कि उसने बोला कि उसके पूरे टूर्नामेंट में ये वाली उसकी क्वालिटी काम में नहीं आई, एंड बस लास्ट में, और इट वाज वर्थ इट, कि इट ओनली द स्ट्रेटेजी ओनली हैज टू पे ऑफ वंस, बट इट विल चेंज द होल सिनेरियो उसका। Hmm. एंड दैट वाज द पॉइंट, राइट, कि वो 14 दिन से लगातार, 14 दिन नहीं, 14 राउंड से लगातार इतने 6-6 घंटे के मैचेस खेल रहे हैं, एंड दे आर बोथ टायर्ड, बट बिकॉज गुकेश बिलीव्स कि हाँ वो ज्यादा रेजिलिएंट है एज कम्पेयर टू डिंग, तो इट ही वुड नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, इवन इफ they keep on playing, so that's what he was betting on, that's what paid off at the end. Hmm. Interesting. I saw the video you shared. People seemed like uh, people went crazy हाँ when he blundered. हाँ, मैं तो बस रिएक्शन डाला था ना गुकेश का, तू उसका देखना Yes. हाँ, मतलब लोगों का जो एक्चुअल जो स्ट्रीम जो चल रही थी ऐसे चेस बेस इंडिया का, दे वर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो एकदम से आ जाता है, लोग पगला जाता है, सब क्या हो गया है। And he is the youngest world champion. हाँ, इसके पहले आई थिंक गैरी कस्पारोव थे, वो 22 इयर्स के थे जब वो वर्ल्ड चैंपियन बने थे, अब कुकेश सिर्फ 18 इयर्स ऑफ एज में वर्ल्ड चैंपियन बन गया। And he's the first Indian to be a world champion. नहीं, विश्वनाथन आनंद थे ना, 2000 में बने थे, उसके मतलब विश्वनाथन आनंद के बाद में सेकंड वर्ल्ड चैंपियन है वो इंडिया का। Interesting. How do you decide to stop playing chess professionally? लाइक विश्वनाथन आनंद इवन तो अब उतने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, बट ही स्टिल पार्टिसिपेट्स इन सम टूर्नामेंट्स। इट्स आई गेस वो बेसिकली डिपेंड्स ऑन हाउ टायरिंग इट इज। जैसे जब बहुत लंबे लंबे टूर्नामेंट्स होते हैं, दे वुड नॉट पार्टिसिपेट, बट जो छोटे होते हैं और ज्यादा
टायरिंग नहीं होता, जैसे जो ब्लिट्स टाइप के जो कम टाइम फॉर्मेट वाले, दे कैन पार्टिसिपेट इन दोज। तो बस फ्रीक्वेंसी कम होते जाती है, इट्स नॉट लाइक एट सम पॉइंट दे completely स्टॉप प्लेइंग, ऐसा नहीं होता है। हम्म, And Vishatanand हाँ, is still in, he's still in top 10 among the top players, do you know? वो even though वो कितने 55 years of age के, but फिर भी वो top 10 में आता है वर्ल्ड में। oh, so you don't see itna decline in their ability as you see in other sports हाँ with age. हाँ, Hmm, मतलब हुआ है डिक्लाइन ऑफ interesting. कोर्स, उनका उनकी हाईएस्ट रेटिंग कुछ 2811 थी, बट उनकी करंट रेटिंग अभी 2750 है, तो अबाउट 60 पॉइंट्स लूज कर गए, विच इज मैसिव उनकी पीक रेटिंग से। बट फिर भी लाइक इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स ही स्टिल इन टॉप 20 और टॉप 10, उसी में होवर करता रहता है वो। Hmm, interesting. You hmm. So what happens now that he's a world champion? सो अगला वर्ल्ड चैंपियनशिप 2 साल बाद होगा अपेरेंटली। मेरे को उसका पैटर्न एग्जैक्टली समझ नहीं आया, बिकॉज रिडिंग लेरन पिछले साल वर्ल्ड चैंपियन बना था, एंड अपेरेंटली नेक्स्ट ईयर नहीं है वर्ल्ड चैंपियनशिप, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर होने वाला है। तो आई एम नॉट श्योर हाउ दैट वर्क्स, उनका कैसे शेड्यूल डिसाइड होता है। बट ये अब वो 2 साल तक वर्ल्ड चैंपियन रहेगा और फिर एक नया चैलेंजर आएगा 2 साल बाद। Hmm. मैग्नस Like कार्लसन दो जो है। दो साल तक वो हाँ position hold करेगा without being challenged. हाँ Oh, interesting. Yeah, Magnus Carlsen. हाँ, तो जो इंटरव्यू हुआ था उसमें गुकेश से भी ये क्वेश्चन जब पूछा ना कि अब क्या होगा, तो वही पूछा था उससे, तो गुकेश ने बोला था कि इवन दो ही इज द वर्ल्ड चैंपियन, ही इज नॉट द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बिकॉज द बेस्ट प्लेयर इज मैग्नस, ये गुकेश ने खुद बोला, अकॉर्डिंग टू लाइव रेटिंग होती है। एंड दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज ही हैज समथिंग टू लाइक क्लाइंब अप टू, मतलब किसी से compete, एक वो है ना उसके पास चैलेंज है राइट अभी भी। तो Hmm. आई थिंक गुकेश इज, इवन दो इज द वर्ल्ड चैंपियन, ही इज रैंक 5th इन द वर्ल्ड। उसके ऊपर एक दूसरा इंडियन है अर्जुन नाम का, जो उसकी गुकेश ज्यादा रेटिंग की है उसकी। तो लाइक हाँ, ही कैन स्टिल इम्प्रूव अ लॉट, और उनसे उनके साथ compete करे वो, इवन तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं, बट जैसे तो नॉर्मल भी टूर्नामेंट्स होते रहते हैं ना, उनमें compete कर सकता है वो, रेटिंग वाइज अपना क्लाइम करने का ट्राई कर सकता है बेसिकली। क्योंकि तो ये रेटिंग तो चेंज होती है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट टूर्नामेंट यू पार्टिसिपेट इन। right. Hmm. उसका तो वही एम होगा अब। Interesting. Hmm. तू खेल रहा है आजकल चेस? आई एम प्लेइंग चेस एक्चुअली अभी 2-3 दिन से चैंपियनशिप के बाद से ऐसे ही थोड़ा जोश आया कि हाँ मैं भी खेलता हूँ। एंड आई हैव नोटिस मेरी रेटिंग गिर चुकी है काफी पहले से। हाँ, हाँ, मेरी पहली रेटिंग मतलब परफॉर्मेंस मेरा अबाउट 1400 का राउंड रहता था, अभी मेरा परफॉर्मेंस 1100 का राउंड चल रहा है। कोई बात नहीं, विल पिक अप सून. आई गेस वो मोमेंटम का भी रहता है राइट, कि हाउ मच पजल्स एंड हाउ मच कितना वो प्रैक्टिस में है तुम्हारा पोजीशन सॉल्व करना और टैक्टिक्स वगैरह देखना। Hmm. I didn't watch any films आई डिड नॉट। recently. झूठ बोलता है. डॉन टू देखी थी तूने और मैंने साथ में. अच्छा हाँ, हमने डॉन टू देखी थी आई फॉरगॉट अबाउट इट हमने अभी इसी 2 हफ्ते हम्म. में देखी थी, इट फील्स लाइक कि हमने बहुत टाइम पहले देखा था।
वही तो मैं कह रहा हूँ, like it feels to me it feels like a really long time since we recorded the last podcast. हाँ. I don't know why. Uh, what did you think about Dawn 2? It was pretty enjoyable. I have to say, मतलब no matter how Oh, cringy it was, uh, I did enjoy watching it. that is a surprising reaction, you know. हाँ. I, Like I was not expecting that. I think मेरा ये कोई भी मूवी मेरे को दिखाएगा, if I'm watching it with people, I would enjoy the movie most likely, no matter how boring it is. You enjoyed the jokes I was making. Uh, I personally uh, did not like this one as much. Like you know that I really enjoyed Dawn, the first film. I have not watched Dawn, so I guess मेरा हाँ वो था कि मैं मेरा कंपैरिजन नहीं था, कोई इसका बेसलाइन नहीं था कंपेयर करने के लिए. Maybe, but this one uh, felt obnoxious to me comparatively. The first one still like seemed sort of like it was weird and over the top, but it seemed self-aware while doing that. Hmm. And the characters seemed more interesting too, I would say. But this felt like a little taking itself a little seriously, I Hmm. would say. You know what Which it reminded me of? Dawn 2. It reminded me what? of Doom movies. Have you watched them? Of course, I Dhoom I do not remember at all. कभी देखी हो तो. Dhoom 2, I used to watch that film a lot when I was a kid. टीवी पे आती रहती थी. Me too. और Dhoom 3 तो Dhoom 3 है. मेरे को कुछ याद नहीं क्या होता. आई थिंक ऐश्वर्या राय थी उसमें और अभिषेक बच्चन, ये दोनों थे उसमें. कौन एंड सी वाली? धूम 2. और जॉन अब्राहम था उसमें शायद. जॉन राइट. अब्राहम फर्स्ट वाली में था. फर्स्ट सेकंड वाले में में था. there's ऋतिक रोशन. ओह राइट, ऋतिक. डू डू यू वांट टू सी इट अगेन, धूम और धूम 2? आई विल वॉच इट. Yes. मैंने तो अभी कुछ दिन पहले भटूरे से पूछा था if we would like to watch Dhoom together. क्योंकि like he likes bikes and Dhoom French as a franchise is like heavily हाँ. surrounded with bikes. तो बदतमीज ने मना कर दिया. हाँ. तू और मैं देखेंगे धूम. यस. Yes. But yeah, I can see the comparison. Both of these films actually Dawn more so than Dawn 2. Dawn 2 still have bits of it, but Dawn and Doom have this really specific 2000s feel to it, हाँ. which like they're just like frozen in that time, and it's like they feel like uh they preserve that time pretty well, and how what kind of media and this distinct style of media that existed back then. हाँ. डॉन का अभी इफ यू डोंट नो थर्ड पार्ट आ रहा है. अनाउंस हुआ था आई थिंक पिछले साल. कौन कौन रहेगा उसका मेन कास्ट में? Of course, like I, I would Shah Rukh Khan has retired from playing the character.
Uh, I would say that he's too old. That's probably why he retired. And हाँ. I, I personally felt that he even looked a little too old in Dawn 2 to me. हाँ. Like, Dawn in के time पे he looked young enough to play the character. Actually, But हाँ हाँ did you feel okay? Hmm. I feel like it might be a little offensive to say this, but when I watched Dawn 2 with you, I just felt like कि ऋतिक रोशन की हाइट कम है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. ऋतिक रोशन I mean, ये शाहरुख खान. शाहरुख शाहरुख खान. oh no he is pretty short. Shahrukh Khan is really short. Like to the extent कि I Like thought कि how is he a popular actor? yes, that it is surprising that he's the biggest actor in India and he's not that tall. हाँ. Actually, Om Shanti Om mein there's a joke about it. Uh, when he becomes a superstar, उसको when the उसका दूसरे जन्म का इंट्रोडक्शन हो रहा है, he comes out of a car, उसके आसपास फैंस खड़े हुए हैं and वो हाय करते हुए निकल जाता है and a fan comments that he he looks shorter in reality than he does on screen. हाँ. Uh, it's he is pretty short and uh, Hmm. especially compared to Hrithik Roshan. You remember उसमें Hrithik he disguises as Hrithik Roshan at some point. Wait, किसमें? Uh, Dawn 2 में I don't know if तू उस particular time पे stream में था कि नहीं but Wait, Dawn 2 में uh, ऋतिक रोशन था? कैमियो उसका कैमियो था ही डॉन डिस्गाइजेस एज ऋतिक रोशन वो हाँ. मास्क पहनते वो मिशन इम्पॉसिबल में वो मास्क नहीं होते हाँ. विच यू हाँ. पुट ऑन पूरा फेस बदल जाता है हाँ. उस हाँ. टाइप का मास्क यूज करके ओ भाई. या तो इट वाज fun to watch with friends at least हाँ. डॉन तो मैंने अकेले देखी थी Hmm. uh, उसके अलावा आई टोल्ड यू दैट आई वॉच्ड महाराजा राइट Wait, by the way, you didn't answer the question. अभी तीसरे वाले डॉन में कौन मेन कैरेक्टर होने वाला है? Oh wait, I forgot. Uh, Ranveer Singh. Oh, wait, what? Like, I saw your reaction. Hmm. Ranveer Singh, he does not feel like okay, like Shahrukh Khan, whatever you say, he does have a like that badass kind of feel to him. Like I can see that. I do not feel the same way for Ranveer Singh. I would agree that Shah Rukh Khan has a weird kind of charisma which you do like a unique sense of charisma which you do not really see elsewhere. हाँ. Uh, but and Ranveer Singh ki jo image hai, that is wildly different from that of Shah Rukh Khan. हाँ. Like a lot of people find him deeply annoying, and uh, uh, yeah, he just has a very different image, हाँ, and बिकॉज he just जैसे तो अभी डॉन में देखेगा शाहरुख खान की मतलब ऐसा पर्सोना दिखाता है लाइक ही इज क्लेवर और लाइक श्रूड काइंड ऑफ राइट. रणवीर सिंह लाइक जैसे जिस मूवीज में वो ऐसे एज अ विलन एक्ट भी करा जैसे आई थिंक वो पद्मावती या समथिंग में एज अ विलन एक्ट एक्ट करा था राइट वो.
तो Hmm. he does not seem a shrewd guy. वो बस reckless टाइप का या उस सेंस में हो सकता है. Immature. हाँ. He comes across as immature. हाँ. I will, uh, yeah, that is his image. But I must also admit that uh, by looking at his films, he seems to be a pretty good actor, हम्म. like despite his image. Because his fandom seems closer to that of Salman Khan than Shah Rukh Khan. I mean, if you know what I mean. हम्म. Yeah, so people are surprised by it, but ultimately it is an acting job, I would say. हाँ. So maybe it doesn't matter. Because I'm sure people would have felt the same जब Dawn आई थी, because you know that Dawn is a remake of an old film, right? Like वो हाँ. उसमें अमिताभ बच्चन था. राइट राइट. हाँ हाँ. Uh, if you do not know this already, I'll tell you. Like Dawn जो अमिताभ बच्चन वाली थी was written by जावेद अख्तर, and ये जो नई वाली Dawn है इसका रीबूट टाइप का, that is made by Farhan Akhtar, the son of Javed Akhtar. ओह. So like, and it's not just a copy of that film. It takes that idea and he takes that idea and puts his own twist on it. And I would say that it is a pretty he does it in an interesting way. हाँ. Uh, yeah, we were talking about Maharaja. हम्म. I told you I watched Maharaja. It's a film. इस साल रिलीज हुई थी. It's been sort of popular. Um, uh, I yes, told you to watch it if you could, right? If you forgot, like, हाँ. but I am guessing you did not watch it. I did not watch it. I wanted you to watch it because I feel that I have a lot to say about this film, but हम्म. at the same time I cannot say much about it without going into spoilers, like anything interesting about it. And you can tell me spoilers. I don't think I will be watching it anytime soon. And uh, like it wouldn't be a meaningful और okay, sure. discussion. Like अगले बात के लिए सेव करके रख सकते हैं इसको. Yes, man, like if you ever watch it in the future sometime, हाँ. uh, uh we can talk about it. Maybe you can watch it with your mama or something. Hmm. Sure. Uh, do you have any memory of demonetization? Demonetization. Yeah. Uh, like जब नया नया आया था तब ऐसा कुछ था ना कि when people use swear words in their YouTube videos, it would get demonetized. Oh, Uh, I'm talking about Notebandi. अच्छा अच्छा. uh, hmm. I don't think. 2016 में था. हाँ, आई थिंक हाँ, पूरा नेशन वाइड उसका बहुत बड़ा इवेंट था, बट घर पे मेरे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा था. आई डोंट थिंक वी हैड एनी कैश एट होम एट द टाइम. Hmm. Like, there's also the fact that I
We were people without responsibility back then. Like we're हेलो just हेलो teenagers. Hello. हाँ ते आवाज कट गई थी Uh, I was saying that back then we were teenagers without responsibility. So I guess even if there was a lot of stress around it, a lot of it probably would have gone unnoticed for us because we हाँ weren't actively dealing with it. हाँ Yeah, that was a very stressful people event for a lot of people. I don't know much about it really. I've watched this film by Anurag Kashyap, Choked, which is centered around demonetization. wait really there was that much stuff associated with it for to make a movie I think it's just a story set in demonetization. But what do you mean by that? It was a huge event. You could easily make a movie about that. आई मीन एज फार एज रिमेम्बर उसमें मेन प्रॉब्लम लोगों को बस यही थी कि हाँ उनके पास नोट है अगर उनको उससे एक्सचेंज करवाना है नोट को तो देन दे विल हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग लाइंस इन फ्रंट ऑफ Every day. बैंक्स हाँ बट हाँ ठीक है इट इज प्रिटी इनकन्वीनियंट बट लाइक इसके अलावा और क्या इशू था Like because it I think that it was from what I know it wasn't managed properly either because this was kept a secret from everyone, right? हाँ So there's only so much you can do to prepare for what's coming, and like to control a country of so many people to manage them. That's obviously going to be very challenging. yeah but like you said there is enough content to make a movie about it that's what I'm unsure about. What do you make films about it though? But was there that much struggle? Because I would assume कि अगर कोई movie इसके ऊपर बना रहा then there has to be some kind of tragedy or struggle to someone, I guess. Okay, why did that happen? Why was demonetization a thing? It was mainly to deal with black money and corruption, right? कि जो cash में भर भर कर रखे अपने पास में उनको वेस्ट उनको पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा because they cannot convert it easily. Uh, Yeah, the film sort of मैं premise बताता हूँ तुझे film का. There's this woman who works at a bank. Uh, she is in a shit marriage with like a sort of a despicable husband mm, who's unemployed and uh, like uh, just a reckless, immature guy हाँ, who does not take responsibility. Uh, and this woman wanted to be a singer as well. mm, तो उसका थोड़ा background था, but she uh, could not because when she had the opportunity, she choked on mm, stage. Like mm, nothing really, like out of stage fright, I guess. हाँ, So uh, this woman suddenly discovers रात को 3 बजे इसकी नाली चोक करने लगती है किचन में नाली? What नाली? बेसिन के नीचे नाली Oh, okay. और वो खोल के देखती है तो उससे पैसे निकलने लगते हैं।
Wait, what? 500 के नोट निकलते हैं बहुत सारे. हाँ. हाँ. एंड ये रोज रात को 3 बजे होता है. She starts collecting all that money, and a lot of her stress and problems start going away because now she has the money. A lot of problems are rooted in money, right? Yeah. वेट वेट कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? उसका बेसिन है, उसका बेसिन का पाइप कनेक्टेड है नल से, वो रोज रात को 3 बजे चोक होता है फ्रॉम नोट. 500 नोट्स. हाँ. उनकी ओके. गड्डी होती है वो फिर, like, वो थोड़ा सा उसको बैकग्राउंड दिया है. इट्स नॉट एक्सप्लेन प्रॉपर्ली ऐसा क्यों होता है, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है कि somebody is hiding uh, illegal uh, illegally earned money inside their sewage, but because of some malfunction वो सीवेज से निकल के वहां आ जाता है. हाँ. But it doesn't matter that much. हाँ. But what matters is उसके रात को 3 बजे मैजिकली पानी से पैसे निकल के आते हैं. हाँ. And uh, suddenly, uh, so okay, the movie is sort of divided into two parts. एक तो ये वाला, and then एकदम से फिर एक दिन midway through the film demonetization हो जाता है. हाँ. And okay, I think Anurag Kashyap is famously anti-Modi, हाँ. and he creates this really despicable character in the form of her husband. And वो demonetization की न्यूज़ आती है टीवी पे, and this woman like is completely हक्की like she's speechless. I mean, does she really suffer that much? Because मतलब 500 के कितने ही पैसे आएंगे ज्यादा से ज्यादा? Wouldn't that be a real issue only if like बहुत ज्यादा ही बड़ा अमाउंट हो? उसके अलावा ऐसे एक नॉर्मल फैमिली को कन्वर्ट करने में इशू आएगा उसको? Yes, like you, पहले तो it was enough money क्योंकि अ, पैसे पैसों की गड्डियां आ रही थी उसमें से. हम्म. It was a lot of money, and if you have that much money and if you're submitting it to the bank, you have to account for it, right? हाँ. Anyway, then the film transforms to, yeah, seeing how the demeanor of people around her change because she works in a bank. Everybody is expecting her to help them, and it also goes into, I don't didn't specifically understand how that happened, but it also goes into uh, how ineffective the entire demonetization was at getting rid of black money because people found ways to uh, avoid losing their money हम्म. somehow. Uh, yeah, and all that happens. And yeah, I guess that's one of the criticisms of this film, that it feels like two different films. एक वो उसको magically पैसा मिल रहा है, and then the whole demonetization fell apart. Yeah, I think It, this film demonetization. is just pure hate for Modi. What?
आई वुड थिंक कि अगर डिमोनेटाइजेशन वाला नहीं होता देन द फर्स्ट पार्ट इन इटसेल्फ कैन बी अ मूवी. Actually, from what I understand, uh, that was the case. This script originally did not include demonetization. ये demonetization के पहले लिखी हुई script थी, and then demonetization happened, and then and they felt that that really adds to the film. I think that's why it feels like two different films. मैं बताता हूँ और मैंने क्या देखा. You have been playing. You played something with Varun, right? I don't know. The Forest. Yes, and you know how we started playing Terraria at some point. ये सोच के कि हाँ इतना ज्यादा एक्सपेंसिव गेम है, इतनी सारी चीजें करने को, वी विल प्ले इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और हमने उसको कुछ दिन के अंदर खत्म कर दिया. Hmm. ओके, तो बेसिकली द सेम थिंग हैपेंड, और हमने द फॉरेस्ट 2 दिन के अंदर खत्म कर दिया. पूरा गेम खेल खेल के. Huh. एंड इट्स What नॉट अ is स्मॉल. it? सो बेसिकली प्रेमिस ये रहता है कि हम एक फ्लाइट से कहीं जा रहे होते हैं, फॉर सम रीजन हमारी प्लेन क्रैश हो जाता है एक आइलैंड में. एंड वेल एट फर्स्ट वी ट्राई टू सरवाइव उस आइलैंड पे. हमको खाना कलेक्ट करना है, हमको पानी कलेक्ट करना है, हमको हंट करना है बेसिकली, और पानी के सोर्सेस, मतलब क्लीन वाटर को ढूंढना है बेसिकली. एंड नॉट जस्ट दैट, उसके बाद उस आइलैंड पे अपेरेंटली कुछ ट्राइबल पीपल की कॉलोनीज रहती है जो कि अटैक, दे आर लाइक दे कैनिबल्स और समथिंग, और वो हमको अटैक करता है फॉर सम रीजन. तो हमको उनसे डिफेंड करना है अपने आप को. और ऐसे ही बहुत सारे मैकेनिक रहते हैं, मतलब एक ठंड वाला रहता है कि हाँ रात में फायर जलानी है, फायर से फिर खाने में को कुक करना है. तो बेसिकली हाफ ऑफ द गेम इज सर्वाइवल. एंड फिर देन यू एक्सप्लोर अ लिटिल बिट एरोप्लेन के जहाँ क्रैश हुआ था उसके आसपास और हर जगह पे, एंड ये फाइंड आउट कि कई सारे केव सिस्टम है, and you can explore those caves for finding more weapons and stuffs, and then you find out more, like try to think and try to find, क्या बोलेंगे इसको, you find out that there is more stuff going beneath the surface, कि यहाँ पे सिर्फ ट्राइबल पीपल और हम क्रैश नहीं हुए, यहाँ पे और भी कुछ चल रहा है. तो हमें हिंट्स मिलती है. एंड ओ बाय द वे आई फॉरगॉट द मेन प्लॉट. हम हमारा जो बच्चा रहता है एक, हमारा वो किडनैप करके उठा के ले जा लेते हैं वो ट्राइबल पीपल. तो हम, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हमारे बच्चे को ढूंढना होता है बेसिकली. Is it a two-player game? उसको कितने भी प्लेयर, मतलब एट मैक्स आई थिंक 4 प्लेयर खेल सकते हो, बट कितने भी प्लेयर में तुम ये गेम खेल सकते हो बेसिकली. इट्स बेटर एट Hmm. प्लेइंग मल्टीप्लेयर की, ज्यादा मजा आएगा, बट सोलो भी खेल सकते हो उसको. Hmm. तो हाँ, तो हम केव सिस्टम एक्सप्लोर करते हैं. एंड इट सीम्स कि हाँ इस मतलब बेसिकली और भी बहुत सारी चीजें फिर स्टोरी अनलॉक इसमें डिस्कवर होती है कि एग्जैक्टली exactly क्या चल रहा है, हमारा प्लेन क्यों क्रैश हुआ था, क्या हो रहा है, सब पूरी स्टोरी है उसके पीछे. तो एट एट मतलब मोस्टली सर्वाइवल गेम है ये, बट उससे आगे फिर हम और एक्सप्लोरेशन वगैरह रिलेटेड भी पूरा कंटेंट है इसका, स्टोरी रिलेटेड कंटेंट. दो जो केव सिस्टम है दैट इज स्पेशली रियली फन पार्ट, कि उसको तुम्हें अपना पूरा क्या बोलेंगे, इक्विप, अपने आप को पूरा इक्विप्ड करके तुम्हें एक्सप्लोर करने जाना था केव्स. और वो दैट इज रियली लाइक, क्या बोलेंगे, एक प्रॉपर हॉरर गेम एक्सपीरियंस, कि पूरे डार्क केव्स रहते हैं वहां पे, मॉन्स्टर्स एंड स्टफ रहता है. हाँ, आई फॉरगॉट टू मेंशन, इसमें सिर्फ
ट्राइबल पीपल नहीं रहते इसमें, अजीब अजीब से म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स भी रहते हैं, विच यू फाइंड आउट कि उनका ओरिजिन क्या है वो बाद में डिस्कवर कर करके एक्सप्लोर करके। Mm-hmm. तो या इट वाज प्रेटी फन, आई वुड से। जल्दी खत्म कर दिया हमने ज्यादा ही खेल खेल के, बट इवन इन दैट इट वाज प्रेटी फन। Interesting. हमने पूरा उसमें अपना, हाँ, इस एक्चुअली से बहुत सारा कंस्ट्रक्शन बहुत सारा कर सकते हैं इस गेम में। तो हमने अपना पूरा बेस बनाया, मतलब फायर प्लेस और स्टोरेज का एरिया, सोने का एरिया। फिर उसको डिफेंड करने के लिए पूरे चारों तरफ वॉल्स क्रिएट करी। और इसमें बहुत डिफिकल्ट होता है एक्चुअली रिसोर्सेज कलेक्ट करना, कि जैसे वॉल्स बनाना है तो लकड़ी कलेक्ट करना पड़ेगा, और लकड़ी के लिए तुम्हें पेड़ काटना पड़ेगा, विच इज क्वाइट tedious एक्चुअली, लाइक हाउ यू वुड अज्यूम इन रियल लाइफ, राइट? वैसा। तो काफी डिफिकल्ट होता है इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह करना। तो वैसा कर करके हमने पूरा बेस बनाया डिफेंड करने के लिए। एंड हमने एक क्लिफ के बाजू में बनाया था हमारा बेस, ये सोच के कि हाँ, क्लिफ के एक साइड से अगर मतलब आ नहीं सकते ना एनिमीज, जो क्लिफ का जो प्लेन साइड है वही से एनिमीज आ सकते हैं, तो वो इजी रहेगा। बट देन वी वांटेड टू गेट सम वाटर, और वाटर का सोर्स नदी से होता है। हमको नदी के पानी को उबाल के बेसिकली पानी बनाना होता है, ड्रिंकेबल वाटर। तो हम चाह रहे थे कि ऊपर जहाँ क्लिफ हमारा बेस है वहां से हम नीचे ऊपर आ सके इजीली। बट हम ये इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे थे। हम चाहते कि ऊपर से रोप डालें और वो रोप नीचे तक जाए क्लिफ के बेस तक के, और फिर हम वहां से पानी लेके वो रोप को क्लाइंब करके वापस ऊपर आ जाए। बट वो रोप का जो प्लेसमेंट है वो हो ही नहीं रहा था, एंड वी वर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। हमने एक वो बनाया था, एक पूरा जिपलाइन टाइप का सिस्टम बनाया था। तो हम ऊपर से नीचे जा पा रहे थे जिपलाइन के थ्रू, बट नीचे से ऊपर नहीं आ पा रहे थे। एट द हाँ. एंड हमने पूरा उसका कुछ फिगर आउट करा था कि हम डायरेक्टली क्लिफ से नीचे आने के बजाय ऐसे ब्रेक कर करके, मतलब प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म होते हुए 2-3 बार होते हुए जाएंगे, तो वो फिर वो वर्क करा। बट हमने एक्चुअली फिर जब तक ये सब फिगर आउट करा, तब तक हम वो बेस का अबैंडन कर चुके थे और आगे एक्सप्लोर करने लग गए थे, विच सीम लाइक अ बेटर आइडिया। कि एक जगह पे मत रुक कर आओ, पूरा एक्सप्लोर करते रहो, अलग अलग जगह मूव करते करते। Sounds like you really enjoyed the game. हाँ, हमको देन वी Hello. कैन गो थ्रू अनदर रन। और हमने सारे केव्स एक्सप्लोर भी नहीं करे थे एक्चुअली। उसमें 9 केव्स थे, उसमें से हमने आई थिंक 3-4 ही एक्सप्लोर करी थी। Oh. हाँ। कितने घंटों में खत्म कर लिया? Did you just play a lot in the हाँ, 2 days या फिर नहीं 2 दिन नहीं में नहीं, खत्म हो एक्चुअली गया? हम क्या सोचे कि हम वॉक थ्रू देखने लग गए थे कि अगली प्रो गेम को, क्योंकि इसमें एक्चुअली गेम के अंदर कुछ साइन नहीं होता है कि प्रोग्रेस कैसे करना है उसमें, गेम में। तो मे बी हम्म. द डेवलपर्स एक्सपेक्ट कि हाँ, एक्सप्लोरेशन करते करते ही तुम सब पता कर लो क्या आगे प्रोग्रेस करना है। बट पर्सनली आई थिंक दैट वुड बी टू डिफिकल्ट। जैसे अब गेम खत्म कर देता, हमें पता है ना क्या बात है, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू फिगर आउट विदाउट लुकिंग अप गाइड्स की आगे गेम में कैसे प्रोग्रेस करना है स्टोरी में। तो अगर गाइड फॉलो करते हैं देन इट इज नॉट दैट लॉन्ग, मतलब थोड़ा सा है, मतलब कुछ पर्टिकुलर तुम्हें केव्स एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बट ओवरऑल उतना लंबा नहीं है। तो फिर उसका तुम गेम आई थिंक 3-4 घंटे भी ज्यादा बोल रहा हूँ उससे, अगर तुम स्पीड रन करोगे तो फिर तुम आई थिंक 1-2 घंटे के अंदर ही पूरे गेम को खत्म कर सकते हो। अदरवाइज 3-4 घंटे में, अगर सिर्फ तुम गेम को खत्म करना चाह रहे हो तो, बट एक्सप्लोरेशन के साथ करोगे तो फिर काफी घंटों का गेम प्ले है। हम्म. It's a streamer game, right? आई डोंट थिंक सो, आई थिंक इसको ऐसे फन खेलने के लिए भी अच्छा, काफी अच्छा गेम है। No, like I'm talking about it. Like it's popular among streamers. हाँ हाँ,
इट इज। मेरे को मतलब माँ के प्यार से पता चला इस गेम के बारे में। Mm, nice, nice. Have you watched ओए लकी लकी ओए? हाँ। देखी है तूने? आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट इट। Have you watched Catch Me If You Can? यस, आई हैव वॉच्ड दैट। In its premise, it's similar. वो तो Uh, मैजिशियंस के ऊपर है ना, कैच मी इफ यू कैन। what? No, it's Catch Me If You Can is about this. I think it's non-fiction. It's a non-fiction film about this guy, this con man who uh, 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 like uh, presents himself as different people. Uh, मॉर्गन फ्रीमन रहता है ना कैच मी इफ यू कैन में, इफ आई रिमेम्बर I think you're करेक्टली। thinking Now You See Me. ओ हाँ, ए वेट, नेवर माइंड। कैच मी इफ यू कैन में क्या होता है? देन आई हैव नॉट सीन इट। It's about this guy who uh, cons people by diff. Um, he sometimes disguises as a pilot or a lawyer and stuff like that, and he actually participates in those careers just हाँ, using a costume and his confidence. That's about him. हाँ, Uh, I am not that fond of that film. It's an alright film. I enjoyed Oe Lucky Lucky Oe more, which is also about a con man, and it's an interesting film. It's about this guy and how the different father figures have affected him in his life. It's हाँ। sort of a character study, I would say. Uh, I'll tell you one interesting thing about this film. You know who Paresh Rawal is, right? नो आई डू नॉट। Uh, oh my God, में वो आस्तिक जो था. ओ माय गॉड में, अच्छा वो, हाँ हाँ ठीक है। Uh, आस्तिक नहीं, sorry, नास्तिक. हाँ हाँ, नास्तिक। Yes. So this guy plays his father in this film, Paresh Rawal. हाँ। And what's interesting about it is that he has three father figures throughout the film as he grows older, goes through life. And हाँ। all three of them are different characters, and all three of them are played by Paresh Rawal. ओके। Uh, it's just an interesting thing about this film. हम्म। And they all sort of have a negative effect on him. Like हम्म। where you expect there to be love and support, they there is none, and sometimes they fuck him over. It's an interesting film to watch. हम्म। So yeah, it's about this. He's pretty much a con man, and a thief जो भरी दोपहरी में लोगों के घर घुस के चोरी कर लेता है कई बार,
just Oh. using his confidence, Hmm. which honestly, it is always interesting to see that, I would say, because it feels like such a huge flaw in how humans function, and it is how humans function. You, Huh. you present yourself with a degree of confidence. If you do that, a lot of people would not be able to question you just by not having the amount of confidence that you have. Hmm. 2 बिल्लियां बैठी हुई हैं मेरे सामने, मुझे दिख रही है बाहर। एक दूसरे ओहो। को घूर रही हैं, मोटी मोटी बिल्लियां। एनीवे, उसके अलावा something I'm excited to talk about. हाँ हाँ। I have been watching recently, पिछले 3 दिनों से, ब्योमकेश बख्शी। आई हैव हर्ड दैट नेम। क्या होता है उसमें? Uh, you probably have heard of the film that came out a few years ago, Detective Byomkesh Bakshi. आई थिंक सो। हाँ। This character is, I believe, an old Bengali character, a Sherlock Holmes-esque character, ओह, like वेट what वेट we वेट, इसमें ये उसकी इसकी मूवी क्या है? वेट, Sushant क्या Singh नाम? Rajput. हाँ हाँ, यस, आई हैव सीन दिस मूवी। Yeah, इट वाज अ गुड and मूवी इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। yeah, I remember liking it too, but I need to watch it again. I don't remember much about it. हाँ। Anyway, 90s में दूरदर्शन पे एक शो आता था, ब्योमकेश बख्शी करके, ओह। which features this character. And I was not aware of it at all. And from what I understand, the film is based on the show, sort of, a little. हाँ। Uh, so I w- watched, started watching it recently every morning with Samiksha, दो लोग बैठ के तो watch. She 90s used का to, दूरदर्शन हाँ, का शो तू बताया? yes. रियली? सो इट इज इट गुड? बिकॉज इफ आई रिमेम्बर करेक्टली उस टाइम पे मतलब इंडिया का मीडिया उतना खास नहीं था। मतलब ओवरऑल क्वालिटी आई वुड से। See, that's what is interesting. That it's what I found interesting about it. I wouldn't say that it's the best detective show ever. हाँ। I mean, it's like not honestly there. It, the cases. अभी मैंने बस 3 episodes देखे हैं, but the cases in this feel closer to Chacha Chaudhary than they do to a clever Sherlock Holmes story. I mean, the complexity of the cases. But हाँ। it really scratches a specific itch. हाँ। क्योंकि, I mean, to be honest, it's really difficult to be impressed by detective uh, shows, TV shows. Yeah, I mean, one of the most popular detective shows in the recent years, Sherlock. I don't like it. I find it a little too obnoxious. हम्म। Like it creates an illusion of being clever by like saying a lot of stuff before people can realize or understand what the guy said, हम्म। uh, and saying more than what people can process, but it is not clever.
It Hmm. merely creates the illusion of that. Huh. In that way, I would say that most detective shows are not very interesting. You used to read a lot of Detective Conan, right? Yes, I was going to mention that. How कुछ did साल it पहले, uh, हाँ, how did it compare? कुछ साल पहले I read Detective Conan. I think I was in 12th grade probably. I, Huh. out of nostalgia, I decided to read that manga पूरी उस टाइम जितनी थी अभी तक it's ongoing. उसके 1000 के ऊपर चैप्टर्स मैंने पढ़े over the period of a year, Mm-hmm. and I genuinely enjoyed that routine. It uh, I cannot offer much critique of that manga. Like I don't have cannot say much specifically about uh, Detective Conan क्योंकि uh, it's been a long time since I read it. Uh, Hmm. but what I can say is that it sort of scratches a very similar itch that Detective Conan did. Hmm. And what makes it even better is sort of the characters. I really like the character of Byomkesh Bakshi in this show. He feels to me more like a nosy neighbor than a Sherlock Holmes-esque detective, cool detective. I mean, he is pretty cool, I would say, but his character is like that. He a lot of times acts like a gossipy auntie, always trying to uh, yeah, yeah, always asking people around, asking around about whatever's going on. Hmm. And okay, this could just be a bias. Maybe that's what I want to say. But to me, it honestly feels very gay coded. Wait, what? You know what gay coded is, right? No. Okay. So, पहले, you know that uh, homosexuality was and still is in India at least. It's not accepted. It's seen as a taboo and it's seen as wrong. So, a lot of like media back then, which wanted to represent uh, queer stuff, would incorporate it with subtlety, Hmm. by hinting at certain relationships and stereotypes, uh, by the way they say things. And like Byomkesh Bakshi has uh, his Watson too, right? Sort of. He is a journalist. His name is Ajit. So the Oh. first episode is him going to these random apartments. वहां पहुंचता है एक दिन Byomkesh Bakshi as a random आदमी with a false name and says he wants a place to stay. Hmm. वो बोलता है कि जगह का owner that he does not have like any rooms left right now and अभी देव कोई खाली होने भी नहीं वाले
वहां हम्म। पर he finds अजीत sitting in the same common area. वो अकेले में उससे बात करता है. They're like convinces him to let him move in together with him because he wants to move there to like ultimate. ये अभी reveal नहीं हुआ है, but he wants to move there to be able to solve a mystery. हम्म। But he's like, uh, मैं पे कर दूंगा तुम्हारे कमरे का पूरा भाड़ा मैं चुकाऊंगा. I just need a place to stay. Uh, हाँ। and there are certain dialogues that really seem like they couldn't be without intention. Like uh, जब ओनर वापस आता है, the Ajit says something like uh, uh, मैंने डिसाइड किया है कि ये हम लोग साथ में एक ही कमरे में रहेंगे. हम उम्र है, समय भी कट जाएगा. And it like there are many instances like that which I I feel I would feel ignorant in not acknowledging them. I हम्म। watched Sherlock a long time ago, but I also remember feeling the same about Watson and Sherlock's relationship in that show. I think he even gets jealous when Watson gets a wife, I think, something like that. ओके। But yeah, and at the end of the this episode, first episode, वो reveal करता है कि मैं ब्योमकेश बख्शी हूँ. Like he is not a detective yet, and he does not like being called a detective. हाँ। This was his first case, and he uh, says that he's not a detective. He's Satyaveshi, yeah, which is सत्य की खोज करने वाला. ओ भाई। Which is yeah, like Detective Conan also has a similar uh, tagline. He says, "All one truth prevails." ओके। I have read a little about him since then, and it makes sense. I mean, it's interesting. Actually, I think it gets interesting, his title of Satyaveshi, because हम्म। that's one of the differentiating factors of him as a character from other popular detectives in fiction. I think it is. I've not witnessed it yet, but I think that uh, over anything else, he cares about figuring out a mystery. Like हम्म। like more than people and possible victims, he cares to solve the mystery, and that shows in his work, from what I understand, which is interesting, I would say. आई एम क्वाइट फैसिनेटेड कि ये इतना पुराना इंडियन शो है वो भी डिटेक्टिव के ऊपर बेस्ड, बिकॉज जनरली देखेगा इंडियन शोज काफी मतलब तो देखा ही है ना, ओवर द टॉप टाइप के होते थे एंड इतने ग्राउंडेड टाइप के आई डोंट रिमेम्बर मच मीडिया। It is more well considered, I would say. It's not that over the top. Yeah, हम्म। थोड़े मतलब as I told you, like थोड़ा चाचा चौधरी टाइप के mysteries हैं, which I wouldn't really call ऐसे over the top. Uh, I don't exactly know what you have in mind by that. Are you thinking of soap operas? हाँ काइंड ऑफ जैसे पूरे खतरनाक एडिट्स के साथ, तो जो Oh no, सास it's बहू not के। that.
These are हाँ 40 minutes episodes. हर episode में individual cases होते हैं. हाँ And at the okay. end of the episode, I was telling you, when he reveals that he's Byomkesh Bakshi, he was, yeah, solving this case. वो अजीत को अपने घर बुलाता है. अजीत is unemployed. He is able to get some articles published from time to time, but other than that, he does not have a job. As the uh, he is living with Ajit पूरे episode में, and he sometimes like is making observations along with him, like telling him to observe that, like Sherlock tells Watson to observe हाँ things. Like Watson sort of exists as a person to vocalize his thoughts to, right? So the readers can understand what he's thinking हाँ without you having to use thought bubbles. हम्म, So uh, yes, उस तरह का रोल होता है माइनर अजीत का, एंड एट द एंड ही इनवाइट्स हिम एट होम चाय के लिए. अजीत घर पे चाय पी रहा है, listening to his story and interest. And, and at the end of the episode, out of nowhere, this guy says, "You should move in with me." हाँ Uh, we both cheered so much at that at that moment. हम्म And what I also appreciate is another part aspect of that episode, particularly I appreciated was I'm not sure again if it was. I'm even less sure if this was intentional, but uh, the villain of this particular story was uh, a doctor, and he particularly practiced homeopathy, हम्म and at some point he's giving them medicines, uh, and I think as a I don't exactly remember the context. uh, कि अभी दवाई लेना ठीक होगा क्या, ऐसा कुछ. तो ब्योमकेश बख्शी पीछे से आके बोलता है, होम्योपैथी से कभी किसी का नुकसान हुआ है क्या?" Like it, and at another instance he says a completely different instance. he हम्म he was discussing कि ये तो डॉक्टर थे, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं. उस बीच में there's an excerpt of the dialogue, होम्योपैथी तो सिर्फ एक दिखावा था. Like, it felt like they were taking certain shots at homeopathy. I don't know about that. हाँ Could be just things I want to listen personally. But yeah, I'm enjoying the show really. Yeah, scratching that हम्म itch. Talking about gay people, gay. हाँ Uh, I watched the challenge. I watched Challengers. हाँ Uh, what is it about? Paisa. It's a very sexual film about tennis. About tennis. Yes, Let I me I repeat a I on sentence. What did I just hear? Anyways, go on. it's a very homoerotic film about tennis. Okay. Uh, I personally think that you would like this film. I do not know why, but I think you would Wait, like this what? film. Uh, and I would actually be interested in hearing your reaction to it. This takes this makes really good use of
sexual tension as an idea, and it's a film that has actual sexual scenes in it, but none of it feels as erotic as actual tennis. वो It's a really well made film. I don't know. ओके भाई. Hmm, yes. Yeah, I guess for now, just want to say that I really liked it. In the future, if you watch it, we'll probably discuss it then. Uh, आई हाईली again, डाउट. तू ऑलरेडी 3 मूवीज में को अब रेफर कर चुका है देखने के लिए. I want you to watch everything. भाई. Anyway, I think that's pretty much all the films I watched and TV shows. Maybe. Hmm. मैं और वरुण अभी 2 दिन से एक नया गेम खेल रहे हैं, Left 4 Dead 2, and it is such a great game, I have to say. It is a pretty simple game जिसमें हमको एक zombie apocalypse में survive करना होता है pretty much. But I feel like ऐसे classic games को somehow मैं कैसे dodge कर गया है. बहुत सिंपल है, zombies के hordes आ रहे हैं, हमको shoot करना है, that's all there is to it. But it's so fun, even with its simple premise. तेरे को Hmm. याद है जैसे तूने वो हमने मूवी देखी थी, which was a homage to those what B movies and stuff. What was that movie? Uh, रॉड्रिगेज की फिल्म थी वेट नंबर मैं हाँ. बताता हूँ तुझे तो बोल तो जैसे उसमें जो पूरा वो रहता है ना, सीन्स इस टाइप के रहता है कि हाँ zombies अटैक कर रहा है, वो मस्त उनको उनके थ्रू प्लाव करते हुए जा रहे हैं. दैट्स प्रेटी मच व्हाट इज हैपनिंग. इसका कोई एकदम डार्क सेटअप नहीं है, कुछ ट्रेजेडी वगैरह नहीं चल रही. नो, जस्ट सिंपल एज दैट. यहाँ zombies आ रहे हैं, हम उनको बढ़िया शूट करते हुए जाते जा रहे हैं. प्लैनेट टेरर हाँ, प्लेनेट टेरर उसी टाइप का. एंड इसका इतना सिंपल प्रेमिस होने के बाद भी ये काफी मजेदार है. इसको खेलना वरुण के साथ खेल रहा था मैं. एंड ऐसा भी नहीं कि हाँ इट वुड गेट स्टेल ओवर अ टाइम. उसके जैसे जैसे खेलता है तो उसकी डिफिकल्टी बढ़ते जा रही थी हर एक लेवल के साथ, टू अ पॉइंट कि हाँ हमको जैसे जो कल जो खेले थे उस पे हमको सेम लेवल को आई थिंक 3-4 बार रिस्टार्ट करना पड़ा था. और उस पॉइंट तक वैसे पहुंचने में ऐसे टाइम लगता था, ऐसे 15-20 मिनट हर एक रिट्राई करने पे. तो हमको एक प्रॉपरली स्ट्रेटेजी बनाना पड़ा था कि हाँ कैसे क्या करना होगा, और आइटम्स को कैसे यूज करना है, उसमें से पाइप बॉम्ब वगैरह या मोलोटोव वगैरह उसको कैसे यूज करना है. सो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग इन दैट सेंस. हम्म एंड इट इज मेंट टू बी प्लेड इन कोऑप. मतलब उसमें 4 का स्क्वाड रहता है. अगर तुम्हारे साथ कोई रियल प्लेयर्स नहीं तो वो बॉट्स जैसे ऐड करेंगे बाकी प्लेयर्स. बट इट इज मेंट टू बी प्लेड इन कोऑप. तो ऐसे पूरी स्टोरी चलती रहती है, एंड you're supposed to experience it with your friends basically. हाँ In the similar fashion of the forest जो मैं बताया था वैसे ही है कि हाँ स्टोरी चल रही है, and you can play experience with friends. तो लाइक उसमें इन गेम वो कैरेक्टर्स है, उनकी पर्सनालिटीज हैं, एंड you like basically role play as them. कि like they all have their own dialogues और उनके कट सीन्स वगैरह आई गेस जो चल रहा है उसका. हम्म
जैसे zombies में जनरली देखेगा रेसिडेंट इवल टाइप के देखेगा, या उसमें जनरली ऐसे स्लो zombies होते हैं राइट, जैसे जैसे धीरे धीरे चलते चलते आ रहे हैं, या फिर वो काफी मतलब तुम्हें यू टेक योर टाइम एंड शूट देम। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसे zombies भागते हुए फुल स्पीड में स्प्रिंट करते हुए तुम्हारी तरफ आएंगे, और कहीं कहीं तो जंप कर सकते हो, और पूरे होड़ मतलब 50-100 zombies का पूरा होड़ इतनी स्पीड से भागते हुए आ रहा है, और ऐसे बिल्डिंग्स के ऊपर इतना ज्यादा पूरे इकट्ठा हो गए। तूने वर्ल्ड वॉर Z देखी है मूवी? यस। तो उसमें तो याद है ऐसे पूरा पिरामिड क्रिएट हुआ था, zombies के वॉल क्रिएट हुआ थी पूरी एक, और कैसे पूरे भागते हुए zombies रहते थे। that that is the kind of zombies this game has, कि तुम्हारे ऊपर पूरी बारिश हो रही zombies की, and you have to survive through it. Like it almost feels overwhelming at first कि इतना, हम पहली बार जब खेले तब हम पहले लेवल 1 पे हमको 3-4 बार रिस्टार्ट करना पड़ा था। इतना ओवरवेलमिंग लगा था हमको स्टार्टिंग में, वी वर क्वाइट क्वाइट सरप्राइज्ड कि नॉर्मल मोड में इतना डिफिकल्ट, इतने डिफिकल्टी से स्टार्ट करेंगे वो। बट as you get used to it, it gets pretty fun. Hmm. Yeah. कभी स्ट्रीम करना, आई वुड लव टू वॉच। मेरा लैपटॉप तो देखते हैं, अब उसमें पर तो फैन ठीक कराना, उसके बाद भी मतलब वो गेम को रन करते करते स्ट्रीम करेगा, वरुण स्ट्रीम कर सकता है, आई गेस। यस। हम्म। या। एंड इट इवन हैज, जैसे वरुण कह रहा था कि अगर हमने पूरा गेम खत्म भी कर दिया तो उसमें कस्टम मैप्स भी होते हैं, लाइक जो यूजर मेड मैप्स है, और यू कैन प्ले them with your friends. ओह, लाइक काउंटर स्ट्राइक में जैसे होते थे पहले। इट्स एन ओल्ड गेम, राइट? हाँ, it's quite an old game. आई shared an image with you. Image. Oh, take place in India. Yes. Hmm, interesting. So this is a So, announcement for the 2025 Shinchan film, which will take place in India. hmm, how do you feel about it? It is an interesting idea. Okay. I mean, we all know the reason it's happening because Shinchan is pretty huge in India. Like, Hmm. probably it's watched more in India than anywhere else in the world. हाँ, I think it's also huge in Mexico. हाँ। Uh, and कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जहाँ पे शिनचैन मूव्स टू मेक्सिको। अच्छा, हाँ, आई डू रिमेम्बर, ऐसा कुछ था, मैक्सिकन थीम वाली एक मूवी थी। वो अम्यूजमेंट पार्क से रिलेटेड होता है राइट, कि वो कैक्टस एंड दिस हाँ, होल। कुछ तो वियर्ड कैक्टस वाली मूवी थी। आई रिमेम्बर नॉट लाइकिंग इट। या एलियन मैं इन्वेजन होता है आई थिंक, वो मेक्सिको में अम्यूजमेंट पार्क घूमने जाते हैं, एलियन इन्वेजन होता है कैक्टस वाला समहाउ, और समहाउ पानी से वो मर जाते हैं, तो वो एक बड़ा सा कैक्टस वाटर बलून बना के लास्ट में फोड़ते हैं उनके मदरशिप पे। यस, ऐसा कुछ होता है। रिमेम्बर इट। फिर
point ये है that I feel that it could be a very surface level exploitation. They हाँ dance or music डाल देंगे and they won't really do anything interesting with an Indian setting. हाँ. Uh, I mean, I'm still interested in watching that. Hmm. Uh, uh, also, another piece of optimism that I have about this film comes from the fact that Shinchan films have been improving recently. Oh. Mm. Recently, there have been some nice Shinchan. Hmm. Another So interesting हाँ हाँ. thing you would notice about this film is it's very much centered around Bochan. हाँ वो that's what I was going to ask you. बोचन क्यों है पोस्टर में? Uh, I read some comments from the voice actors of Shinchan, and it seems that Bochan is pretty much the main character of this film. Oh. Hey, I don't think And बोचन के कहीं कोई भी कहीं पे एक्सप्लोर करा गया कि एग्जैक्टली उसका क्या बैक स्टोरी एंड स्टफ है आई गेस. nobody even know who his parents are. हाँ एग्जैक्टली आई थिंक बाकी सारे कैरेक्टर्स के दिखाए ना. मेरे को याद है मसाओ के और वो जो वो था एक जो स्लाय वाला कैरेक्टर था, क्या नाम है उसका? Kazama, कजामा. उसके भी पेरेंट्स दिखाए थे. वो रिच होता है आई थिंक, ऐसा कुछ होता है ना. एंड नैनी के Nane, भी. हाँ नैनी के वो थे ना कि बनी को सीक्रेटली बीट अप करती उसको जब उनका दिमाग खराब होता है तो. yes. बट बोचा के कभी नहीं दिखाया है. Huh. हाँ. That's इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. yeah, and apparently the Nietzsche tagline says Sayonara Shinchan. हाँ. Hmm. I guess it's interesting. Yeah, Maybe sayonara in the sense he is moving away or something. Hmm. But we'll see. yeah, yeah, it seems interesting, and I look forward to it. Hmm. So, do you have any other media to talk about? Media or any other thing? नहीं, I think I'm done for today. Yeah, I इसके guess let's. Uh, आज मैं थीम के लिए ब्योमकेश बख्शी का म्यूजिक oh. एंडिंग थी. बिल्कुल. Anyway, bye. Hey, we were thinking of some tagline, right? कि क्या मतलब पॉडकास्ट का कुछ होगा tagline or something. What do you Forgot want? about it. You want tagline? We'll shout together. क्या क्या चिल्लाना है तुझे? Hmm, पता नहीं भाई. As lifeless as ever. I was like, how is that a goodbye message? Stay lifeless. You want us to shout, stay lifeless together? Okay, let's shout, stay lifeless together. साथ में दो, three, अरे हाँ. 2, 1. Stay lifeless. Stay lifeless. Okay.